I don't know much, but whatever tweets I read, people were crying in the sense that they acknowledge that they have a huge loss, blah, blah, blah. Now, I have been constantly telling people, don't write options, don't buy options. And if you buy a small quantity. This event on Wednesday shows nobody is equipped to deal with a blowout. आपने बेचा, फिर लिया, फिर बेचा. Because option writing is for professionals. तुम 5 लाख रुपया कैपिटल लेके आते हो, 50 लाख कैपिटल लेके आते हो और ऑप्शन राइट करते हो, वो बहुत ही गलत है. मिनिमम 20 crores you should have to write options. तो ही आप बेचो. Then you are okay uh, capitalized. तुम 5, 10, 20, 50 लाख से ऑप्शन बेचते हो, क्यों बेचते हो? ये फुकट का पैसा है क्या? वो जो पैसा देता है आपको, वो क्यों देता है? ऐसा ही एक झापट मारता है, 4 बार देगा और एक बार आपका कैपिटल लेके चला जाए. तो humble request, don't write options. Option kills. And one interesting thing that I noticed yesterday, that the cotton prices have corrected a bit, not a bit, a lot. Yes, from 152 levels, it's come down to 97 today. So one can have a look at the blue chips in textile sectors, comprehensive mills, not some spinning mills and this and that. You will be making good sum of money. And as you might be aware, textile sector is the largest employer of people in India. So, and the market cap of textiles would be 50,000 or 1 lakh crore, which is very minuscule. You will find good multipliers, multi-baggers in this sector. It's beaten down like a pulp, 8,000 crore market cap and this and that. Another interesting thing happened was on Wednesday in the spaces. I said Reliance will be 1700. Then Mr. Acharya also added to it, and he jokingly said, "अरे 800 भी हो सकता है." Some duffer wrote a tweet saying, "We are doing this, listening 1,500 people and." Making such statements, we are eroding the wealth, and he marked it to SEBI and RBI. So I have the resources. I called him up and said, "Why are you doing this?" So he said he has lost money and again he has bought Reliance. Now I request anybody who is not in sync with me just to speak to me, or he can complain to whomsoever they want, FBI, CBI, anybody, nothing will happen to me. So don't waste your time marking tweets to SEBI and all that. That's utter childishness. If you have a problem, please talk to me. I will. And I'm for sure I'm saying
Reliance will be 1700 first. No doubts about it. I'm 100% certain. Okay, it might take a while or whatever. And another thing, this DIIs are everyday buying. I don't understand. और एक स्पेस में कल सुना मैंने कि एफआई के पास में 20 लाख करोड़ का माल है, 19% ऑफ द इक्विटी. सो आई वांट टू टेल दैट जेंटलमैन कि इंडिया का मार्केट कैप 2,40,000 करोड़ है, 240 ट्रिलियन है, और एफआई के पास में 42 ट्रिलियन का माल है. अभी 42 ट्रिलियन में से वो कितना बेच देगा अगर कोई दिन दिमाग सटका और बेचा, और डीआई कितना ले लेगा. दैट्स ऑल. आई नाउ आई हैव टू ड्रिंक वाटर. ओके अभिषेक प्लीज. यस सर, थैंक यू। ये जो अपना आईटी इंडेक्स का जो दिख गया ना कि सीधा गैप अप खुल के उसके बाद पूरा घुस गया, वहां पे दिख गया था कि एफआई सेलिंग है भाई साहब। वेंकट से फेवरेट स्टॉक बस चार पांच ही है, आईटी के स्टॉक्स है, एचडीएफसी ट्विंस है, दिख गया था उधर ही कि बेच रहे हैं भाई साहब। यार बट today's movement was, although it might appear bullish, see, but what I feel is अगर मार्केट को जाना है ऊपर यहाँ से, even for a short while, the only guy who can do it is Reliance, no one else. वो थोड़ा बहुत आएगा ऊपर, प्रॉब्ली 2600 आ सकता है. That think that is, but the broader market selling is, it's not sustaining at all. मतलब रुक नहीं रहा, देख रहा है वो. यार ये लास्ट हफ्ते में भी अगर आप देखोगे, there are a lot of stocks which have fallen quite a bit, but you have to have an eye for it. That's the entire thing. जिसको समझ आती है कि कहाँ पे करना है बेरिश, he can definitely make money out of this market. It's all about that. बस यही है कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में खेलने वाले, reduce your size to 1/5. अगर 20 लॉट खेलते हो तो 5 लॉट खेलो यार. मतलब जितना तुमको ये करना है, मतलब जनरल पब्लिक, मतलब ज़्यादा खेलता नहीं हो, बट देन जस्ट फैक्ट ऑफ द मैटर कि अगर करना भी है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग या निफ्टी में ट्रेडिंग, तो करो 1/4 साइज से, बिकॉज मूवमेंट इज सो मच दैट इट्स इनफ फॉर यू टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बैक होम. वन रूल ऑफ द मार्केट, जस्ट टेक मनी बैक होम एवरी डे, दैट्स इट. जितना हुआ है जस्ट स्टे इन द ग्रीन, जितना भी हो सके. I know markets are difficult last 3 4 days if you see, uh, because the kind of swings you're seeing are like crazy. ये 400 500 पॉइंट ऐसे ही घूम जाता है बैंक निफ्टी, या तुम्हारा निफ्टी घूम जाता है 100 200 पॉइंट. सो दैट इज टाइम व्हेन यू हैव टू जस्ट लेट डाउन योर दिस वन, कि साइज कम कर दो, कैपिटल है वो रखो आराम से हाथ में, मौका मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा, तब तक वेट करो. इट्स लाइक अ पेशेंट मैन्स गेम. जब तुम बैठोगे ना पैसों पे, जस्ट कीप योर कैश इन हैंड, दैट्स इनफ. मिलेगा मौका, तब नहीं, तक वेट करो. अ, आप बोले ना रिलायंस 2600 तक जाएगा. हाँ सर, मैक्स टू मैक्स. नो नो नो, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग उसको लेके जाते हैं जोर जबरदस्ती से. उसका बस चले तो अभी गिर जावे. बट यहाँ पे रैंपिंग हो रहा है. यू अंडरस्टैंड. Stocks are being यस सर. ramped up. Now, this ramping and all, yes, okay, it's part and parcel of the game. But come July, when the results will be out, things will be very difficult. Our tech Mahindra, we will not be surprised if it touches 600, 700. Just an example. So, but that was the वापस most कोई. interesting thing about today, you know, because की exchange का results आया and everyone was running behind कि बहुत अच्छा आया results ये वो, and then the kind of thing that happened in IT, that was a clear indication कि नहीं है भाई दम बुल्स में.
नहीं नहीं, ये क्या होता है कि रिपोर्टर लोग लिख देता है कि अच्छा है। मैंने वो ट्वीट मारा था कि भाव डाउन है ये एक्सेंचर का, और 2019 का कंपैरिजन से अ, खराब है। और वो रिपोर्टर लोग तो तेजी का ही बात करता है। मेरे से आज एक गलती हो गया कि वो प्रशांत भाई को मैं ट्वीट मार दिया कि रॉन्ग रिपोर्टिंग एंड ऑल दैट। आई अपोलोजाइज, बट इट्स अ फैक्ट यार। तुम भाव देखो ना, तो बोलते हैं भाव नहीं देखने का, रिजल्ट देखने का। अरे भाव से ही तो रिजल्ट का पता चलेगा। एंड एनीवे, ये जो पी रेशियोज है ना टेक्नोलॉजी के, वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। कम से कम यहाँ से आधा हो जाए पी रेशियो, और अपना बाजार टिका जाता है। दे आर, इट्स नॉट अ फ्री मार्केट। People, DIs are ramping up, supporting. I don't understand why they are doing. I can't put my hand on it. Okay, Samat. या सर, गुड इवनिंग। सर, रिलेटेड टू स्टॉक्स में मैं अपना बात रखूंगा। जो ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हो अभी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे आया है हीरो होंडा और टीवीएस मोटर। तो नेक्स्ट वीक जो भी है, जैसे लॉन्ग किसी ने किया है तो वो थोड़ा ध्यान रखना। अभी ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज ये जो है अभी सेल्स, मॉनसून सेल्स, उसका डिस्काउंट कर दिया है भाव ने। तो जो 30th को या फर्स्ट को आएंगे नंबर्स, उसको डिस्काउंट कर दिया है ऑटो सेक्टर ने। सेकंड थिंग, जो एक्सेंचर का सर आप बात कर रहे हैं ना, यू आर वेरी राइट। उन्होंने फ्यूचर गाइडलाइन है ना डाउन किया है खुद का, जो लास्ट ईयर दिया था उससे। बट दे विल नेवर, द न्यूज चैनल विल नेवर शो दैट। थर्ड थिंग सर, निफ्टी अगर कोई कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी अभी आई सी अराउंड 200 to 250 मैक्सिमम गोइंग अप। 200 से 250 ऊपर जा सकता है, यानी 16 से 16,100 मैक्सिमम। तो अगर पुट्स बाई कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं तो साइजिंग कम कर देना, और पेशेंस रखना, या सेकंड या थर्ड वीक जुलाई का पुट लेना अगर लेना भी है तो इट विल बी मार्क टू मार्केट। एंड फोर्थ, I get a lot of DMs regarding my view, negative view on the market. एंड मेरे को बहुत बोला जाता है सर कि आप अपना व्यू चेंज कीजिए, आप व्यू चेंज कीजिए। बट जो है सो है अभी तो। आई विल नॉट चेंज जब तक 17,200 कन्विंसिंगली नहीं टूटता है। आई विल बी बेयर, आई विल बी शॉर्टिंग। और बैंक्स में एक्सिस बैंक खराब दिखता है, केनरा बैंक है एंड टाटा पावर, ये सब शॉर्ट कैंडिडेट्स है अभी। दैट्स इट सर। ये निफ्टी तो 17,000 क्या 20,000 हो जाएगा। नहीं नहीं, वो सर, 30,000। वो तो और ठीक, हमको आदमी लोग एमेच्योर बेयर्स बोलते हैं सर। बराबर है। वो कौन अ, बोल? बोलते हैं सर, कई लोग बोलते हैं सर एमेच्योर तो बेयर्स, पर ठीक क्या है है ना। कि लोग नहीं। लोग लोग हाँ हाँ सर। कोई कुछ भी बोले, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने को अपने आप का मालूम है ना। क्यों फिक्र करते हो दूसरे का? सर, आपने तो देखा है हाउ आई ट्रेड, तो वो अभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर उसमें। हाँ तो छोड़ो ना, कौन क्या लिखता है क्या है। और जो बोलता है ना कि आप बेर में से निकलो, तो वो लिख दो ना, हाँ, मैं बुल बन गया, लेकिन बोलूंगा बेरिश, ऐसा कुछ बोल दो। इट्स ओके यार। और सर, आगे। अभी है ना ट्विटर पे सब लोग बुलिश है। 15,800, 900, 16,000 की बात कर रहे हैं। बट एक भी ट्रेड वो करते होंगे ना, आई डाउट हो एक भी ट्रेड लेके गए होंगे। अगर जिगरा है ना कोई कॉल लेने का किसी के पास, तो दिखा दे उसका स्क्रीनशॉट मेरे को। कोई कॉल लेके जाता नहीं है, और सब पूरे गांव को बुलिश बुलिश करके बैठा दिया है।
अरे आप मेरे को आप सर आप मेरे बोलो, आज के दिन में 150 पॉइंट ऊपर खुला मार्केट, बराबर है। अभी और 60 पॉइंट्स बोथ साइड्स खेला, बराबर है। और जो 15,700 के आसपास जो दारू पी के निफ्टी घूम रहा था, ओके, किसने पैसा बनाया अल्गो के सिवा? अल्गो ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, उसमें ही वो 3 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे ही घूम रहा था। तो उसके अलावा तो किसी ने पैसा बनाया ही नहीं आज के मार्केट में। अगर कोई बोल दे कि मेरे 15 लाख कमाया ना 20 लाख कमाया जो ट्विटर के, वो सब गलत चीज है ये सब। और हम उसके अंदर आ जाते हैं, जो ऑप्शन के हम सेलिंग करते हैं ना, उसमें सब वही मर जाते हैं छोटे ट्रेडर्स, 2,000 3,000 के भाव नहीं, देख के। पर वेडनेसडे को लगता है बहुत भूचाल आ गया था। बहुत लोग ने पैसा तोड़ा बहुत ऐसा। बहुत सर। यस 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 यस, बहुत बहुत है सर। दोनों तरफ मारा सर मार्केट ने, दोनों तरफ सबका काटा है स्टॉप लॉस। हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज ऑप्शन मत बेचिए। जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऑप्शन मत बेचो, ऑप्शन मत बेचो, ऑप्शन मत बेचो। वो जिसके पास 10 20 30 करोड़ है, उसका काम है, वो भी चटनी हो जाएगा। प्लीज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको आप पूछो निफ्टी 50 में कितना स्टॉक है, तो 90% बोलेगा 50। उसमें से आप पूछोगे वेटेज किसका कितना है, आंसर 2 जन के पास ही होगा आउट ऑफ 100। तो तुमको कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम, काहे को चाहते हो? ये फुकट का है क्या? मत खेलो ऑप्शंस, मर जाओगे। चलिए, बहुत हो गया मेरा भी लेक्चर। या डीजे। डीजे। and then श्रीनिवास, एंड देन तरुण जी। एक सर, एक डीजे जी, तरुण जी, फिर अमित जी, Yes. फिर डीजीआरएस और अमित चौधरी। Yeah, hi, good evening, everyone. So, here is my take on the market. Everybody is buying in this market, especially the DIIs, retail. The only big party that is short apart from us is uh, the FIs. And I've been analyzing this information that comes out on what they have been buying, selling. Uh, they actually in this fall they started shorting the market at around 16.8, and then they continued their shorts till 15.4, 15.3. Surprisingly, they haven't actually covered a lot of their shorts. And today they also took some long positions, but they still did not cover their shorts. So gives me an indication that they are maybe slightly bullish in the very short term, maybe for a week or two, and then they're still holding their other short positions. So later on, they might, again start shorting the market. Now, globally, if you look at it, global sentiment seems to be slightly positive. Dow touched its pre-corona high, which is the equivalent of 12,000 for Nifty, and it's given a nice bounce from there. July seasonally remains a bullish month for Dow because if you look at US markets, they usually have a good fall in June and then followed by a short covering rally in July. And it's not unusual to see a green month in a long drawn bear market. In fact, if you look at the 2008 crash, also you had one or two green months. So uh, I won't be blindly shorting now. Just be careful with shorts. If market gives a decent rally, one can think of shorting near the resistance and all. But small resistance at all, don't try to short this market at least for a week or two. Be cautious on the short side. And markets could be volatile. If DIs want to book profits in their shorts, they will take the market down, book their shorts, the market comes up again. So I'm expecting the markets to be slightly choppishly greenish, at least for a week or something. And then we'll I see how want, the data plays out. I want to say one thing. Yes, sir. Dow is down 30% from the top, and it has gone up by 5%.
So we are nowhere near it. We are much higher. Correct, correct. That's what they have touched their our equivalent of 12,400. We haven't. We are nowhere close to that. So anyway, DIs love India and Also, they will buy out the entire FII portfolio and then collapse. Okay. So also, DII seem to be giving a very good exit to FIIs at the expense of retail money. So that's unfortunate. Very, very, very. on And and sir, no, no, one thing. Uh, DIs are buying only what FIs are selling. Okay. The same script and everything. Why the DIs are not buying any other script? वो सब मरने के लिए पड़े हैं. सब मिली So ये जुली लोग भगत है सर. okay. सर और दूसरा सर क्वार्टर एंड आ रहा है तो म्यूचुअल फंड्स की एनएवी भी विंडो ड्रेस करनी होती है, तो दैट्स व्हाई दैट एनएवी मैनेजमेंट इज आल्सो हैपनिंग अभी 3-4 दिन, तो वो Hmm. रहेगा थोड़ा सा. Hmm. या श्रीनी, Yes, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग. So, I think delicious 1-2 weeks of narrative. I look forward to Dunya Bhar ka Chanda Mama tales, Panchatantra tales फैलाया जाएगा. Already शुरू हो गया. Inflation कम हो रहा है. ये वो commodities are cooling off. We need bakras for the next fall. I feel second, maybe latest third week July, we will see the fall which the US markets already have taken. तो हमारा 2000 2500 निफ्टी ड्रॉप हमको जुलाई में मिलेगा. आई फील RIL is a very good shot. वो अर्निंग्स के आसपास, I mean just before the earnings, at best, whatever the price is, that's the best it can ever be. After that, it's downhill. So I'm looking to short RIL. Then next week, thoda technical skill learning program bana raha hu, because I feel there's nothing to do. I don't like playing long, not in this year in this market. So I'm going to just research stocks and see which mid caps, that kind of stuff. थोड़ा फिबोनाची सीखो, ये सब है मेरा प्लान. एंड सब बहुत कूलेड रायता फैलाया जाएगा. People who have their common sense filter on will see through it. Lot of retail is going to come. The only thing I feel sad is a lot of my friends also are going to come and put their precious hard-earned money, and they're going to get butchered in the next maybe 2 weeks, 3 weeks. पता नहीं, ये बहुत वीक बाउंस है. बेयर नहीं, मार्केट रैली के नाम sorry, में शर्म है सर ये. sorry to interrupt. यस सर. आज का मैंने वॉल्यूम देखा और डिलीवरी वॉल्यूम देखा. Pathetic. यस सर, दैट बेयर मार्केट रैली के नाम पे धप्पा है. वी शुड बी ऑफेंडेड एज बेयर्स, सेइंग ये भी कोई रैली है. मतलब इट्स वेरी वीक. सो आई डोंट नो इफ इट लिव इन लास्ट 2 weeks. आई एम जस्ट सेइंग इट ऑन द आउटर साइड. I Yeah. agree with what Karabhai and Samarth and Abhishek were mentioning. When mutual fund हमारा दोस्त है सर, वो बकरा लेके आ रहा है मेरे लिए. तो ड्रेसअप करो, NAV फैलाओ ये सब पॉजिटिव न्यूज नकली वाला. So it's going to be cruel this year for a lot of regular middle class Indians. But ठीक है, we're not here to philosophize. So net sir, next week in a way कुछ मेरे को काफी research करना है. I got caught without any in-depth knowledge on mid-cap stocks and things to short. Now I'm going to make up for that next week. Nothing to buy in this shit market. Sorry, pardon the language. Somebody tweeted NPS returns, National Pension Scheme returns. So they showed a 23% minus. So if this is the state of NPS, what will happen for the pensioners? I don't know. It's really scary, really scary. Yes, sir. Sir, a quick update on what friends in some of these companies are saying about Q2, जो भी है, April, May, June quarter earnings.
we don't know why these companies are valued at these P's anyway. Earnings are going to be bad. वो तो सबको पता है. They are not going to give bullish commentary and all. So this is सब लोग आके बोलने वाला है कि हाँ हमारा फटा है, हमको ये साल का पता नहीं. So then maybe some of this forward earnings, all those things will get adjusted. But unlike till every quarter, आपने देखा होगा whether Levers or Nestle or they all come and give this confidence wala message, oh things are improving, we are recovering from COVID, all that crap. अभी ये लोग कुछ नहीं बोलने वाला है. They want to say things are tough, हमको पता नहीं, market का लग गया, consumer का लग गया, inflation से फट गई है हमारी. They're going to come and give some tough love to in their corporate English. So that also I think will add to our shorting fuel as these results come out. There won't be this sugar coating this time. Okay, thank you. Who's next, Amit? Yeah, Amit ji, Dr. Amit. Good ED evening, sir. and एक मिनट अमित भाई ED and Srini Yes. sorry DJ I will be shifting to the listener mode because 4 5 requests are there in the for speaker mode, so we'll be taking them and we'll be taking again you as a speaker. Pardon me. Yes, sir. Yes. Yeah, Dr. Amit. हेलो गुड इवनिंग सर. Good evening, आवाज आ Dr. रही है? Yes, 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 yes. ओके. व्यू में तो कोई सर चेंज नहीं है अभी. एज इट इज जो भी है ये नॉर्मल फील गुड रिली है अभी काफी टाइम के बाद. तो मैं तो अभी यही देख रहा था जो वीक्स है अपनी जो मींस आर्टिफिशियली बहुत कॉम्प्रेस है. तो मुझे लग रहा है कि अब 2-3 हफ्ते में ही शायद it will be means explode to higher side around 27 और 30 रेंज में. तो काफी लंबे टाइम से जो इंटरनल वॉलेटिलिटी और इंडेक्स की वॉलेटिलिटी बहुत कॉम्प्रेस है. तो वो मुझे दिख रहा है कई डेटा पे पॉइंट ऑफ व्यू पे. तो अभी कंक्लूजन कोई ऐसा एविडेंट नहीं है मगर है काफी फ्रैक्शन में कई जगह पे विजिबल है. तो एक यही पॉइंट है. बाकी तो सब सेक्टर में कमोडिटी जो मेटल पेस है वो बहुत वीक है. जो काफी क्रैश हुए है कमोडिटी. तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए. ओके. और कुछ इंडेक्स में चलता रहेगा सर मैनेज का डिपेंड ऑन वीकली कैसी पोजीशन बनती है. तो वहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है होता है मार्केट के जो 80% मनी वहीं पे प्ले होता है. तो वो होता रहेगा. और आज जैसे एक सेक्टर मिड कैप आईटी और वहाँ पे काफी सारी मींस डाउन साइड देखने को मिली. अप पूरे दिन मार्केट ट्रेंड में था फिर भी. तो वैसा लगता है कुछ चलता रहेगा इस हिसाब से कुछ 2-3 हफ्ते. बहुत ज्यादा एक खींचने वाला लग नहीं रहा है मुझे. ओके दैट्स इट. Thank you, सर. Dr. Thank you. सर मेरा एक क्वेश्चन है. प्रशांत जी प्लीज सब स्पीकर्स बोलेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन रखना. प्लीज हैव पेशेंस. तरुण भाई and then DGRS. Good evening, Sharad sir. Good evening, Abhishek bhai. Good evening, Samar ji. Good evening, sir. So, I've closed all the shots this week, which were Reliance, UPL, Nifty, and having said that, I have no position right now. My view is still the same. Upside maximum I see is 16,250, and थोड़ा अगर यूफोरिया और फैला के बकरों को और फंसाना है तो 16,500 for the index and 35K for the bank nifty. However, also people in Europe and America have started loading credit default swaps for Deutsche Bank and Credit Suisse. So that's an issue and that can be a contagion as well. So yeah, that's it. I don't see any bullishness overall.
Whatever is there is to just trap the retail and other people. So yeah, another thing I learned in one of the spaces today, not today, this week, is that deflation is bullish. So I'm still trying to figure out how deflation is bullish. So if I get an answer, please let me. If I get an answer, I'll get back on that. Okay. One more thing. आज जो वॉल्यूम एकदम ड्राई था, डिलीवरी एकदम ड्राई था, तो ये तो एग्जॉशन है. So uncle, I won't call this BMR a bear market rally. Let's just stick to bounces because that's what they are. They're not bear market rallies, in fact. So थोड़े छोटे मोटे बाउंस आएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. नहीं, और अगर ये डीआईआई जो लेती है, वो फॉरेनर 3,000 का बेचता है और ये 5,000 का लेता है ना, तो आई विल बी चेंजिंग माई व्यू. ये तो मैच ही कर रहा है. वो 2300 का बेचता है, ये 2200 का लेता है. तो यू आर not a dominant player. You are a second party. So if you become a dominant player, so I will be with you. Otherwise, I'm not with you. You understand what I said? Yeah, yeah, एग्रीड सर, एग्रीड. agreed. वो Obviously, मैच हो there's रहा है, also ट्रेड मैच हो रहा है सर. ट्रेड मैच हो रहा है एंड स्ट्रेंथ आ रही है. सो ऑल्सो एक नैरेटिव और चलेगा अभी मार्केट में. शुरू होने ही वाला है. बीच में हुआ था पिछले साल, अब फिर हो जाएगा कि FIIs आर ओवर रेटेड एंड DIIs आर अंडर रेटेड. तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा. एक बार हो जाए तो फिर वील सी क्या करना है. क्रूड का क्या लग रहा है तरुण भाई, और कमोडिटीज? कमोडिटीज, मेटल्स तो टूट ही गया. Crude is still, I'm still hopeful that it stays above 100. If recession is coming and it's looking at recession, then we might go slightly below 100. Otherwise, 100 is the base. 110 is a triple bottom ना. हाँ 110. हाँ, 100 to 110 is the range. ओके. नहीं, वो रहेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा. I doubt, because Russia will not be getting any profits out of the crude if it goes below 100. And that is the main purpose why America has made it down. That being said, America is also releasing quite a lot of their SPR, and they will have to fill it up at one point of time. So what they bought at $35-40, and now they're gonna buy it at $110. So fill तो करना ही है ना. खजाना तो कभी खाली होएगा ही होएगा, unless they start their new pipeline again and Alaska वाली. हाँ. Hello, discussion over. Okay. Okay sir. Yeah, DGR. BGRS. Tarun bhai, I will be shifting you to listener mode. Okay, Pardon bhai, me. okay. Hi, good evening, everyone. Hello, Sharad sir, Samad bhai, Abhishek bhai. How's everyone? Happy weekend. Good. Happy weekend. Good Uh, evening, sir. So if you see my views on the markets, I mean, they've shown a slight up move in the last few days, but I'm not very convinced with this move. I think it's a relief rally, and these can happen, but I think we are very much still in a bear market. And today, very interestingly, I was speaking to a wealth manager from one of the top brokerage firms, Kotak Securities. And he was basically explaining to me just what all you said only, that अभी ये जून क्वार्टर जो ख़त्म हो रहा है, इसमें जो भी आपके PMS, AIF, म्यूचुअल फंड, सभी को क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करना है एंड ऑल देयर रिटर्न्स. So this is for the quarter that is ending in June, so April to June का quarter. And इंडिया में क्या है, ये 95% of these funds are long only funds. So, they are relentlessly buying up whatever stocks they can so that the markets can, stay stable and stay a little bit up.
बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज, अगर आप ये साल देखोगे 2022 का, in 2022 Jan to March भी markets down था. So all their NAVs and returns were negative, and this will be the second consecutive quarter of negative returns. So they are worried at the moment because they want to avoid the possibility of redemptions as much as possible. So they are buying up whatever they can. And Baki markets are celebrating the fact that commodity prices have cooled off. So all your consumption stocks like autos, FMCG, etc., if you see in the last few days, they have been going up. But see, I feel commodity prices going down is not good for each and every commodity. Like Sharad sir had also tweeted about copper. Now, see, copper, I see, it's a industrial metal, right? It's like a barometer for the economy. So whenever copper goes down, it means economic activity and industrial activity is slowing down, which is not good for the economy or for the markets. एंड लास्टली आई फील ये जो रिजल्ट सीजन अभी आएगा ये बहुत ही खराब आने वाला है. एंड आई थिंक सम बुलिश गाइज विल से दैट नो स्लोइंग डाउन ऑफ अर्निंग्स इज प्राइस्ड इन. But in my limited time and experience in the market, what I've seen is that when the results come bad and earnings estimates are missed, then even after the earnings estimates are missed, stocks can continue to go down. I mean, you see, I'll just give you an example of a blue chip that everybody knows, like Infosys. Last time the results were bad, and still, I mean, it's just been going down relentlessly from about 17 1800 levels. और इस क्वार्टर जिस तरह रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़े हैं, स्पेशली क्रूड, it's going to affect many companies very negatively. So I think relief rallies may come in the interim, but I don't see markets going up too much from here. I don't trade much in Nifty, but I don't think 16 100 200 level also will be crossed very easily. So yeah, that's my view. Thank you. नहीं, उसमें डीजीआर है. द ओनली इशू इज द निफ्टी इज कि वो ऊपर गैप अप होता है एंड दैट इट विल सस्टेन. द बुल्स डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ टू गो इट अबव द ओपनिंग लेवल आल्सो. देखते हैं क्या होता है. DGS, you said the commodities have cooled off, Right. and you are absolutely right. Yeah. But in the last are 10 days old. Correct. So whatever inflation in raw material was there, it was there for 2.5 months of this quarter. Right. So the results would be bad. And forward guidance, because I did not specify in the tweet, if copper is at this level, and I have been playing copper since donkey years, it is the barometer Right. of industrial activity. Right. So it's crashing. People are really, actually, they don't know what's what. They are just buying, selling, without any logic. Okay, thank you. Sir, I had one question. So Yes. since you've seen so many markets, bull markets, bear and everything, and recessions and everything else, so usually, so these kind of rallies, I mean, if you want to call it a rally, how long do you think they typically last? Like, is it 3-4 weeks, 1 month, or it can be even longer, you think? Yeah. It can be longer also. Okay. But this one will not. Right. एक दो दिन का करा के, only looking at the volumes and delivery. Right, sir. Delivery volumes are quite low across FNO stocks. Yeah. Okay. Thank you. आचार्य भाई बोलो. गुड इवनिंग. अरे धोखा हो गया, पैसा लग गया, तुम बोला मंदी होएगा. अरे कितना जल्दी है आपको? अरे शांति रखो. इनसाइड बार बना रहा है. मैं मंडे से चिल्ला रहा हूँ इनसाइड बार बना रहा है. परसों जब भी स्पेसेस किया था तभी भी बोला था इफ इट डजंट ब्रेक 15 to 50 थोड़ा अपस्विंग एक आने का बाकी है. तो वो आ गया. अगर ध्यान में हो तो अच्छे से सुने हो तो 15 to 150 to 200 का रेंज तोड़ना था, which it did not break day before yesterday. So it bounced back. So there's nothing to really get worked up. These kind of rallies are quite normal in a bear market.
maybe another 50, 100 points from here. That's a maximum I would give Nifty. And the weekly inside bar is actually telling you there is something more drastic coming in next week. Okay, I expected 14,200 this week, but it will come next week. एक week आगे पीछे weekly chart जब भी देखोगे एक week आगे पीछे चलता है. And this bounce is not absolutely nothing to go feel gung-ho about. There is no strength in this rally, and these kind of rally, there is no base to the market. So probably what I'm expecting is fourth and fifth is one time slot date where time cycles where so by fourth or fifth I expect the market to be fourth or fifth को बचा कितना है एक ही हफ्ता बचा है market to be down. And plus, you also have to understand the start of this entire monthly expiry was much higher. So this is just a small short relief rally. By the end of the next, by Thursday next week, it could be it could be a bad scene. There's absolutely nothing here. Anand, Huh. this is June expiry, right? Correct. May expiry, we closed at 16,170. Yes. 5 दिन ऊपर रहा हाँ. और 16,170 के ऊपर रहा 5 या 6 दिन. हाँ बाकी बराबर. का दिन नीचे ही रहा. Correct. And we are far away from 170 by कितना 400 और 500 point. So net this series we are down. Yeah, we are. See, this series has not ended. We have still till Thursday to go. चार ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 1000 पॉइंट आराम से आंख बंद करके निकाल सकता है. क्या in the bear market you don't look at all those these kind of rallies are not there is no base established here. And this is not the place for the market to show a V-shaped recovery. The V-shaped recovery will come when there is excessive negativity. There is no excessive negativity is still not there. People are still bullish. People still are thinking about market reaching new highs. There's a whole lot of psychology here which doesn't match that V-shaped kind of recovery which can be expected. तो वो नहीं होना है तो बेस बनना है और बेस बना नहीं है. It is a V-shaped recovery here. So this will be get sold into completely. It's just temporary. So you are saying that we can see a further bounce, but later on we'll be seeing a which bar? See, if you 1 second, if you look at the Nifty chart, नहीं there, मेरे को नहीं आता है चार्ट. मैं बोलता हूँ ना 1 सेकंड वो निफ्टी चार्ट तो आने दो पहले एडवर्टाइजमेंट आता है आजकल. और एक 150 पॉइंट जब तक 150 पॉइंट नहीं बनता है और एक 5900 16,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कुछ तेजी सोचने का ही नहीं. Even there, it is going to be a minor teji because the weekly swing, if you can see continuously all the way from October, weekly में lower bottom, lower top बनाते आ रहा है. जब तक एक swing तो नहीं तोड़े, तब तक कहाँ से आप तेजी करोगे? There is no point in thinking about teji here. Let it do something. Let it make at least two higher lows on a daily chart. वो भी नहीं बनाया. तो इतना जल्दी कहाँ से आ गए? सब ट्रेंड चेंज नहीं बनता है. एंड साइकिल्स आर आल्सो नॉट इंडिकेटिंग. प्लस वो जो कर रहा था मार्केट ओवरसोल्ड है बाउंस आना चाहिए. चलो ठीक है उनको भी क्रेडिट दे दो. 43 आ गया आरएसआई 43 44 बस और एक 8-10 पॉइंट 15 पॉइंट आरएसआई दिया तो भी 150 पॉइंट. So I'm only looking there 15,800 Monday by end of the day there should be a close in the negative irrespective of whatever the Dow is doing today. नहीं देयर इज नो. ये तो अपने सोचते हैं कि डाउ ऊपर अपने ऊपर. ऐसा नहीं है यार. ये आज तेजी की बात इसीलिए चल रही है कि डाउ 700 पॉइंट ऊपर है. हाँ
नहीं तो इधर इधर कोई तेजी की बात ही नहीं करता. Anyway, so expecting a bounce here, see, even basically I will go with the chart. Expecting a bounce here when there is no corresponding trend line connecting, there is no corresponding support there when the market went up. This is not the place where the market will find support. This is just not the place. So anybody who's thinking bullish, welcome. You can buy. I will sell more. नहीं मत बेचो भाई, मत बेचो. मेरे पास 18,500 से बेचा हुआ है. क्या करेंगे अभी? ले जाओ 18,500, फिर स्क्वायर ऑफ करूंगा. Yeah, but that's the thing ना, whoever short from much higher levels is the one who will be shorting now. बाकी लोग जो अभी अभी गुस्से है वो तो सब ट्रैप हो गए. अब भाई 18,500 का बेचा हुआ है, 16,000 का कॉल है. अब बोलो क्या करूं? अब ना आप ये खरीद लो, लैम्बोर्गिनी खरीद लो आप. लंबोर्गिनी खरीद के बॉम्बे में नहीं चला सकते मालिक. अरे चला लो, मिल जाएगा, रात को चला लो. अरे रात को भी नहीं चला सकते. एवर सीन लंबोर्गिनी क्रॉस स्पीड ब्रेकर? अरे लाल लैम्बोर्गिनी, अरे कोई भी एक्सिस वाली, हाँ, एक्सिस बैंक वाली लाल लैम्बोर्गिनी, वो चलो खरीद लेना. चलो ठीक है. थैंक यू आनंद भाई. वेलकम. Sir, Anand sir, the confidence which you speak out loudly, I am overwhelmed. Oh, I am honored, buddy. Thank you so much. या प्रशांत जी, आप बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन था. प्रशांत पांडे जी. यस सर, थैंक यू सर. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. सर मैं बस एक टेक्निकल्स पे क्वेश्चन पूछ रहा था. अगर मैं कुछ चीज़ों को थोड़े बड़े हॉरिजन और मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ चीज़ों को, तो मतलब एक ऑब्जर्वेशन था मेरा. मतलब हम लोगों ने लास्ट ईयर अक्टूबर में हाई लगाया था 18,641 के समथिंग का. उसके बाद एक पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है. अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो जो कैंडल थी, पर्टिकुलर मंथली कैंडल, वो ग्रीन थी. उसके बाद एक हॉल्ट होता है, मतलब एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, वो उसके नीचे रहती है. फिर उसके बाद फिर हम एक पहला लो बनाते हैं, मतलब पहला हाई बना. उसके बाद हम एक शॉर्ट टर्म लो बनाते हैं जो कि करीब करीब 16,401 का था. उसके बाद फिर हम एक हाई लगाते हैं, मतलब उस पहले वाले हाई का नीचे वाला हाई रहता है, मतलब लोअर, मतलब क्या बोलेंगे इसको, मेरे ख्याल से लोअर हाई हो गई. तो सेकंड वाला जो हाई हम लगाते हैं वो 18,390 का बनता है. फिर हम एक हॉल्ट लेते हैं और फिर हम एक फिर लो बनाते हैं 15,730 का. और उसके बाद फिर हम एक हाई बनाते हैं जो कि तीसरा वाला हाई हो गया, थर्ड वाला हाई हो गया, टॉप हो गया 18,090 का. उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं, हॉल्ट लिया और फिर हमने अभी लो लगाया रिसेंटली 15,203 का. तो सर एक पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है. अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से जाएं तो ऑब्जर्वेशन में ये निकल के आ रहा है कि अगर सीरीज अगर ये जो कंप्लीट हो रही है तो जो 15,000 का जो ये लो हुआ है अभी रिसेंटली, 15,000 आई थिंक 183, हाँ, तो ये लो बन चुका है. और इस हिसाब से इस कैंडल को ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए और अभी मार्केट जो है वो 16,500 600 तक जा सकता है. और उसकी मतलब इस सीरीज को हम फॉलो करें तो अगली जो कैंडल होनी चाहिए वो जो निकल के आ रहा है लेवल्स, मतलब जो हम ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं, तो वो 17,883 निकल के आ रहा है बाय द नेक्स्ट मंथ, मतलब जो कि जुलाई कमिंग आ रहा है. तो सर क्या सर ये पॉसिबिलिटी, मतलब हम देख सकते हैं इसको? शरद हेलो. सर. नहीं, ये लाइन वाला तो मेरे को समझ में नहीं आता है. ओके. नहीं वो ठीक है, तुम्हारा बात एकदम बराबर लॉजिक लगता है. बट सिचुएशन चेंज हो गया. हाँ सर, एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा हूँ. अगर ये पैटर्न चेंज होता है, मतलब ये सीरीज फॉलो होती आ रही है, तो अभी तक तो ये सीरीज परफेक्ट जा रही है. अगर आप ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब पहली कैंडल टॉप बनता है, फिर एक हॉल्ट लेती है, फिर एक इंटरमीडिएट लो बनाती है, फिर एक टॉप बनता है, फिर एक हॉल्ट होती है, फिर एक इंटरमीडिएट लो बनाती है, फिर एक टॉप बनता है, फिर एक हॉल्ट, और अब जो लो बन गया है, तो नेक्स्ट उस हिसाब से देखा जाए तो क्या सिनेरियो चेंज होगा अगर निफ्टी तोड़ता है 18,000 के ऊपर? तो रुक जा भाई. लार्जर टाइम फ्रेम में आप देखते हो जी, मंथली, तो 4-5 साल का देखो ना. सर 4-5 साल, ओके सर, 4-5 साल का भी देख लेंगे. तो मैं तो अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ जब से मार्केट ने हाई बनाया है. अरे यू कांट चूज एंड पिक. एग्जैक्टली, राइट. आप वही नहीं देख
सकते हो जो आपको देखना है, राइट से नहीं होता है। बी फेयर। और मैं ना नहीं बोलता हूँ, हो सकता है तेजी, हो सकता है, बट ओके अब अपने वहां पे इक्विटी इतना महंगा है, इतना महंगा है, कोई हिसाब नहीं है। समझा? राइट आप आप मारुति ले लोगे 80-200 में। हाँ हाँ हाँ, बोलो आनंद भाई। Too early, Prashant Babu, to say that this pattern is established. अगर आप राइट मंथली कैंडल देख रहे हो तो पहला एक रेड कैंडल आया था, राइट देन देयर वर टू रेड कैंडल्स। सर सबसे पहला जो कैंडल था वो ग्रीन था सर। अरे भाई सुनो तो मेरी बात, राइट राइट सुनो राइट तो मेरी बात। वो ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल आया था, जी उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल आया, दो रेड कैंडल आए, राइट उसके बाद में एक रेड कैंडल आया। फिलहाल अभी तक तो तीन रेड कैंडल खड़े हैं। एग्जैक्टली सर Now these are some patterns which happen, but till they happen, you should not be talking about them. Up, it is possible that we will have a third red candle here, one more green candle in July, and उसके बाद में 5 red candle आ सकते हैं नीचे। जी सर समझ गए? Where I am जी driving you to? हाँ 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 हाँ, so जल्दी है, because you are talking on a monthly chart. It is too early to call for those kind of patterns to form because it's still not clear. बट जब भी आप सिंपल देखो ना, इतना कॉम्प्लिकेट करके मंथली कैंडल तक पहुंच जाओगे तो फिर आप मंथली कैंडल पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। राइट 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 ओके, सो सिंपल देखो, इधर यू लुक एट द वीकली कैंडल फर्स्ट टू गेट द लार्जर आइडिया। राइट ओके, लार्जर आइडिया में वीकली कैंडल देखोगे तो यू डोंट हैव अ क्लियर एस्टेब्लिश पैटर्न हियर। तो एंड इफ यू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो थर्ड हाई में वो ट्रेंड लाइन तो टेस्ट करके आया। राइट ओके, एंड ये नीचे थर्ड टाइम इट इज गॉन, इट हैज नॉट गॉन टू टेस्ट इट। सो द पेंडुलम का जो स्विंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ है इधर। राइट Okay, there's a lot more you need to know about trend lines because you're just drawing trend line on the computer as you get the scale. राइट स्केलिंग चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर मंथली देख रहे हो तो 1 बार इज इक्वल टू 30 पॉइंट्स करना पड़ेगा, फिर आपका ट्रेंड लाइन बराबर चलेगा। देन यू कैन चेंज द ट्रेंड लाइन एंगल्स। ओके सर ओके, दिस इज फॉर निफ्टी अलोन ना, 1 बार इज इक्वल टू 30 सब में मत करना। राइट राइट Okay, so one daily candle, the average range of Nifty is 30 points. So if you scale it to that, then your trend lines will work more precisely. तो वो स्केलिंग जब तक नहीं करोगे आपको एक्चुअल पिक्चर मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, लाइक आई वाज सेइंग बिफोर, आप मंथली कैंडल जो है फर्स्ट ऑफ द मंथ टू 30th ऑफ द मंथ गिनते हो, ठीक है ना? फॉर अ मोमेंट थोड़ा सा आपका विजन बढ़ाना पड़ेगा टू, इफ यू वांट टू बिकम एडवांस इन योर टाइम टेक्निकल स्टडीज। सो 4 वीकली बार्स मिलके एक महीना बनता है। तो इंक्लूडिंग द करंट बार, 4 पिछले वाले बार पकड़ोगे तो आपको एक बड़ा कैंडल बनेगा जिसका हाई ऊपर है एंड क्लोज इज वेरी क्लोज टू द बॉटम। राइट Okay, so you have to look at different ways of looking at the chart. वो जो एकदम टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे देखोगे तो नहीं मिलेगा इसका आंसर। ओके, सो यू लुक एट इट व्हेन यू सी। सो ये एक्चुअली अगर मंथली बार ग्रीन होना है ना, मार्केट को 17,000 16,900 तक पहुंचना पड़ेगा। 16,900 एज ऑफ टुडे लुक्स अनलाइकली। हाँ सर 16,800 सम 900 तक पहुंचना पड़ेगा राइट ओके, उस पैटर्न हाँ, पे तो वो ग्रीन इतना इजीली नहीं बनेगा, वो इधर राइट बाउंस नहीं मिलेगा। दिस इज माय ओपिनियन। यस No, यस यस market can do whatever it wants. So if it does something like 6,900, फिर चेंज करते हैं ना, जल्दी क्या है चेंज करने का व्यू? नहीं नहीं सर एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा था सर क्या ये पॉसिबिलिटी है मतलब क्योंकि जिस पैटर्न को चला आ रहा था मैं उस पैटर्न की सीरीज पे पूछ रहा था क्वेश्चन मेरा एक्चुअली उस पे ही था बस खाली सही बोल रहे हो इट्स टू अर्ली टू जज तो या राइट पहले लास्ट वीक का हाई तोड़ने दो, then we can राइट think of it. ओके थैंक यू। या नवीन जोशी जी।
Good evening, Sharad sir. Good evening, Samat sir. Good evening, Abhishek. Uh, can you guys hear me properly? Yeah, yeah, Yeah. yeah, yeah. Okay, perfect. I do not have any specific stocks to talk about, but there is a lot of bullish narrative that is going नवीन जी, on. आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है. Can you हाँ जी, move outside the home if you are wherever you are? जी सर, एक मिनट सर. Sir, can you hear me now? Yeah. Hello. Hello. Yeah. Yeah. सर मेरा बस ये था कि देयर इज अ लॉट ऑफ बुलिश नैरेटिव जो अभी ट्विटर पे चल रहा है. आई हैड अ फ्यू काउंटर पॉइंट्स टू ऑल ऑफ देम. जस्ट फॉर नॉलेज पर्पसेस आई एम नॉट, मतलब मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है जितने महान लोग ट्विटर पे हैं उनके हिसाब से. लेकिन इफ यू कैन गिव मी लाइक 5 minutes आई कैन गिव दोस पॉइंट्स इफ दैट इज अलाउड सर. नहीं, इतना टाइम नहीं मिलेगा सर. 1-2 मिनट में आप खत्म कीजिए. चलिए सर, तो 1-2 मिनट में मैं बस दो चीजें बोलना चाहता हूँ, if you allow me. So a lot of people are talking about commodities crashing and inflation crashing and deflation being bullish. Commodities are crashing, yes, but we need to, as somebody said on the space, that they're pricing in uh, basic recession in the economy. Recession in the economy is not bullish equity markets in any form or manner. The second thing is a lot of people are saying that inflation is going to be sticky. This is a conversation that I've had with Tarun a few hours ago. अगर आप बुलिश क्रूड का स्प्रेड चार्ट देखें, जैसे रिफाइनिंग मार्जिन जो होते हैं वो अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, विच मीन्स आपका पेट्रोल और डीजल जो आपके घर पे आता है, that price is not coming down anytime soon, which means your inflation is not coming down. The second thing is, if you look at something called the Baltic Dry Index, which is the shipping industry per se, the shipping costs for crude or for any of these commodities has gone up by close to, अगर आप, if you look at some routes between say Japan and America and all of that, by about 82,000%, which means your transportation costs are not coming down in anytime soon, which means inflation is going to remain sticky. The second thing that a lot of people have been talking about is Reliance and Ulta gross refining margins because of the cheap Russian crude that they're getting at the current moment, which they're refining and they're sending out. So if crude keeps going down, because that's supposedly very bullish for the markets, if crude keeps coming down, Reliance will come down along with it because its gross refining margins will keep coming down along with it. No, this Russian crude, there is no more discount. Sir, I'm saying at the current moment, even if it is a 10% discount. No, there is no discount. So there is a discount because at the current moment, India is back Please, channeling. please, there is no discount. Sir, I will. Different, but वो नहीं है. India है वो. So you speak what you want. Okay. The second thing that a lot of people have been talking about very furiously is how bond yields have started coming down in the US markets, which becomes a barometer. There are two aspects to it. Yesterday, Chairman Powell had a House committee meeting in front of the Senate. He basically said we're not going back on cutting rates. One, bonds are selling off in anticipation of a recession in the US economy. It is not coming off because it's a risk off. It is a risk on. It is a risk off environment at the moment in the US markets. So if the bonds keep selling off, money would start moving out of equity markets into bonds because that's the risk-free rate that everybody wants. The second thing that people are not understanding is, or something that everybody on this space should have a very close eye on, is the jobs report that will come out for the last month in the US markets. If the job report number
is anything above expectation or at expectation, the Fed would not pivot till September. They will not. They will go 75 and 50 or 75 more, which is not a bull case scenario for emerging markets. And sir, I know I've taken too much time, but the last thing that everybody wants to also look at is the emerging market bond spreads, which have basically collapsed. If that is happening, it means money is moving out of emerging markets. So either you save the bond market or you save the equity markets is the question most central bankers have at the moment. Over the history, they save the bond market and equity markets crash and burn. Thank you, sir. Thank Thank you, you. Navin. Thank you. Yeah, PD. I'm just listening, sir. It could be absolutely unrelated, but America right now, okay, it's unrelated. Maybe it comes to relate to the market in a few weeks from now. But there is a lot of social unrest that has just started in the US. With their abortion rulings and everything. I don't know how to relate it to the markets, but uh, that is a country divided more than ours today, I guess. And as regards markets, I come here to listen, sir. I am not a professional trader. I take very very long views on the market, but right and business sentiment on the ground. I have a different business. Markets are not my primary source of income, but business sentiment on the ground in our country in business, वो बोलते हैं ना धंधा अभी मंदा है. So that's all I need to say. I'm not qualified enough to speak on the markets. नहीं, जब आप बोलते हो धंधा मंदा है तो और कुछ हाँ. बताओ, और कुछ बताओ ना. सर क्या बताऊं मैं, मेरे को तो इतना मालूम है, और बीइंग इन दी मेडिकल एंड एफएमसीजी फील्ड, इतना मालूम है कि सबका 2 महीने से सेल्स फिगर मीट नहीं हो रहा है. जितने भी बेचारे सेल्स वाले आते हैं, जो भी आते हैं मार्केटिंग वाले, ये वो, उनका 2 महीने से टारगेट्स मीट नहीं हो रहा है सर. तो अगर, एंड दीज आर, आई एम टॉकिंग जो रोज की आइटम्स है, मतलब मैं जो मैरिको का ऑयल बेचता हूँ या डाबर का च्यवनप्राश बेचता हूँ, तो एवरीडे रोज की घर की आइटम है. अगर इसमें भी लोगों का सेल फिगर्स मीट नहीं हो रहा है, तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन द मार्केट शुड गो अप बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. Whether or not they come down or not, sir, Mr. Market knows best, but there is no reason for it to go up beyond a certain point. Or autos doing so well just on the back of commodity prices coming down. सेल किधर है इनका? आप कितना भी सस्ता माल बना लो, उसको उसको खाली यार्ड में रखने के लिए बनाते हो क्या? माल बेचना भी तो पड़ता है सर. बराबर. थैंक यू सर. थैंक यू. Yeah, yeah, Rajiv Soni ji. And Hi, एक मिनट bhai. Rajiv ji. Rajiv Yeah, Gupta, I have sent you a DM request for speaker mode. I am not able to take your request right now on the screen, so I have sent you a separate request on DM. Yeah, Rajiv Soni ji. Sharad bhai, good evening. Samad bhai, good evening. Good evening, sir. Good So as again my learning. तो शरद भाई अभी धंधा मंदा की बात चल रही थी, तो कैन आई ऐड समथिंग? Yes, yes, always. या तो शरद भाई, आई वेंट टू अटाली गंगा अभी 4 days का वेकेशन मनाकर आया मैं. इट्स माय स्टूडेंट्स रिजॉर्ट and I've been associated, I can say openly, because I teach students for the owners of Godrej Phillips, JP Associates, Astral, and you must be knowing Gen TV, and there are many like Dixon.
So I never disclose, but I know them, because I have taught this, grandson and son and daughter. So अभी क्या हो रहा है? There were 20 cottages, and only 5 cottages were filled. So I went to manager, मैंने कहा आपका तो इतना नाम है and all. So धंधा बंदा में even जो इतना बात होता है कि hotels book full and all. So what I've seen over there is liquidity crunches तो बहुत है. Now how I feel and how I relate with the market. See, those who are super rich and top notch, they are enjoying their life. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. But the people like us, for belong to middle, upper middle, and all, liquidity crunches are there. So, and I'm teaching the people of Rajdhani Basin also. So उनसे मैं बात कर रहा था. तो there is a I don't know. I must not relate with political thing and all, but something big is happening in this country. So liquidity crunches तो 100% एक common man को भी दिख रहा है. I'm not relating with the stock market, but I can 100% say कि सबने अपने खर्चों को बहुत कम किया and all, so I can see that. So let's come to your learning part. What I've learned from you again. You said on last tweet, last space, I think so, devoid of knowledge, which really helped me. And one thing which hit me very strongly, Sharad Bhai, that stock market is a rich man's hobby and poor man's addiction. So today's topic is option. I have seen 4 doctors, top-notch doctors of Delhi. One is chiropractor, one is dentist, one is top-notch physician, and one is belong to this orthopedician AIMS. I have seen their portfolio. We were discussing the portfolio. Sharad bhai, 18 crore का portfolio भी 8 crore है. Can you believe this, Sharad bhai? Why you have? I don't know. ये luckily आपने option kills का जो topic रखा उसी से relate कर रहा हूँ. Now they are learning future and options. After losing 30 to 40% because they entered in bull market, and I've seen their portfolio. So what I've learned from you is this devoid of knowledge and rich man's hobby. It's really hit me. And then again, always you say patience and vulture wala jo saying hai, that really, I have become very smart trader now. So trader and investor में भी मुझे बहुत help मिला आपसे और आपकी पूरी team से. Not only you, it's the whole team helped me. That I have decided that I cannot be an investor as of now, because investor के पास equity में इतना पैसा चाहिए, और जो मैं portfolio जिनके देख रहा हूँ, जो मेरे साथ discuss कर रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग सब बैठते हैं आजकल. It's unbelievable, Sharad bhai. Now, how does Nifty matters? Whatever we are discussing, I don't even understand. यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाए नीचे जाए, how does it matter? आप कैसे हिंडाल्को को 700 रुपए 650 लाओगे? आप कैसे बिरला सॉफ्ट को लाओगे? It is 100% rally is required. 50% के बाद अगर मैं आज हिंडाल्को लेता हूँ 315 पे, और अगर मेरा 700 का बाइंग है, 700 को कैसे लेके जाएगा मार्केट? So Warren Buffett says that newbies, novice traders, and stupid traders have diversification, and they do not know the intrinsic and real value. But the market is a great guru, as Benjamin Graham taught him. उन्होंने वॉरेन बफेट को सिखाया कि देखो वॉरेन, मार्केट है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली प्राइस को वहीं धरती पे लेके आएगा, और जब धरती पे लेके आएगा तब खरीदेगा. So after listening you guys and all, I have become, I'm very, very happy, and I'm thankful to you and Samad by team and all, that I'm learning. It's not about bear bull market. I don't believe in this. But what I've learned, कि okay, I am comfortable in Tata Steel now. Fine, 1600 से मेरे को 840 में मिल रहा है. I'm fine. Godrej Phillips मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Fine. But it's a great learning, and I really appreciate your efforts in space and all. So whatever you say, I really take it as a learning, and I'm writing a book. Book in the sense, it's my notes for my students. अभी शरद भाई जो स्टूडेंट्स है ना मेरे पास 12th के बाद, अभी उनका मैंने किसी का 50 लाख, किसी का 60-60 लाख का पापा मम्मी दे देते हैं खेलने के लिए, 30 लाख का पोर्टफोलियो देखा. Stupid shares, future consumers like this. So my point is, options तो killing cats, it's a bankruptcy. We should not. And Warren says that it should be outlawed. इसको तो बैन ही कर देना चाहिए. So all these things help me. तो मुझे आपसे ये जानना था शरद भाई, why this we are talking कि निफ्टी था, आपने जो मुझे सिखाया कि it's a synthetic product. From that day I banned it, and then I researched it in Twitter and all. Nobody has ever become a multi-billionaire in Nifty. और आपने एक बात बहुत अच्छा बोला कि पैसा स्टॉक्स पे बनता है. And then I've started selecting stocks also. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने थोड़ा बहुत ऑप्शंस करा भी, देखा भी. I have stopped it 80%. Now, why I do options, I just take it as a hedging. That's it. For me, options are clearly hedging. So what Yeah, you I see today, also do options.
Yeah. But only in stocks. Yeah. Also, I do only for hedging. Just suppose they have to like 4 lots of future, or if I'm taking a good portfolio, then against that I hedge some, calls input. But still, the topic of yours, this option kills, is very good topic, and we should debate on this to not only to save retailer or someone, to educate and all. So that's it, Sharad bhai. Again, thank you for devoid of knowledge. You talk कि क्यों बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, rich man hobby and poor man's addiction. तो Sharad bhai, I made it a small kind of poster in my room. I want to Oh, be a rich man. I want to be a rich man. I don't want to be a poor man's addiction every 9:15 and start doing options and all. yeah. And patience is a virtue, Virtue is again Thank, really helped me. Thank you, Sharad bhai. Thank you. thank you. Thank you. Ria Dixit, she's waiting for a long time. Sir, before that, sir, trading the D wave. Okay, Good evening, everyone. good evening. Sir, being a nifty future player, first I'd like to tell that. No, Sir, we don't encourage Nifty talk. सर 2 मिनट बोलने दो सर, 2 मिनट सर. thank you, sir. सर, अभी जैसे ये थोड़ा पुल बैक दे रहा है, इट्स एक्चुअली अ पुल बैक ओनली. सो मंडे को एज एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन की गैप अप होगा, बट मेरे हिसाब से गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, और आई वांट कि ये 16,800 के ऊपर ही खुले. एंड माय स्टॉप लॉस और इनवैलिड लेवल फॉर द बेरिश सेंटिमेंट इज 16,900 के ऊपर क्लोज. उस नहीं होता तो आई एम हाईली प्रोबेबली श्योर कि ये सीधा नया लो देगा, वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस विद गैप्स. एंड ऑन द बैंक निफ्टी सर, 34,200 उसके, एक सेकेंड, हेलो, 34,200 सर, उसके ऊपर क्लोजिंग बैंक निफ्टी की नहीं होनी चाहिए. अगर हो गई तो आई एम न्यूट्रल, एल्स इट विल आल्सो गिव अ न्यू लो. और ये स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं दोनों इंडेक्स, इट्स अ हाईली करेक्टिव टू द लास्ट ट्रेंड. ये कोई बेयर मार्केट पुल बैक भी नहीं है, क्योंकि पुल बैक जो रैली में थोड़ा फास्ट मूव होता है. तो ये जो अभी आज और कल जो हुआ है अप मूव, जो भी थोड़ा, ये अभी लास्ट लेग है, ये जो भी है. तो 16,900 के ऊपर डेली क्लोज और 34,200 के ऊपर डेली क्लोज. दैट्स इट. नया लो आएगा, वो नया लो मिनिमम 15,000 और 14,500 रुकते रुकते चला जाना चाहिए. उसके बाद देखते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू. या राजीव गुलाटी, राजीव गुप्ता जी, सॉरी. उसके बाद नीरव भाई बोलना. जी, गुड इवनिंग. थैंक यू समर जी, एंड गुड इवनिंग शरद भाई, एंड गुड इवनिंग ऑल. मैं आपका ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ. ये जो रैली है ये कैसे, इट इज नॉट सस्टेनेबल. मैंने पिछले लगभग 15 महीने से या 20 महीने से जो अपनी रैली चल रही है, तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोट की कि अपने जितनी भी रैलीज हुई हैं उसके अंदर 5 या 6 प्लेयर जो रहते हैं ना, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहते थे रैली के लिए. आप बड़ा सरप्राइज हो गए. एक उसमें है इंडसइंड बैंक, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरा है बजाज फाइनेंस, चौथा है हिंडाल्को, पांचवा टाटा स्टील और छठवां टीसीएस. तो ये 6 प्लेयर अगर मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में रैली हो ही नहीं सकती है. मतलब ये मैंने पिछली कई रैलियों का ऑब्जर्वेशन किया है, और मैंने इस बार देखा कि इस बार रैली में इंडसइंड बैंक ने बिल्कुल भी, मतलब इंडसइंड बैंक इज डाउन, टाटा स्टील इज डाउन, रिलायंस इज नॉट शोइंग अप. तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट तो ये निफ्टी तो सस्टेन कर रहा है अपने लेवल पर, लेकिन जिन्होंने अभी तक निफ्टी को चलाया है पिछले इतने बुल मार्केट में, वो सब प्लेयर्स अभी लैगार्ड्स हो गए हैं. तो व्हाट इट मीन्स इज द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट व्हाटएवर इट इज विजिबल राइट नाउ, इट इज शैलो. तो अंदर ही अंदर मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, अब आप देखो बजाज फाइनेंस का 8,000 से अभी 5,500 का लेवल अभी आ गया है. तो जब तक बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टीसीएस, इन्फोसिस, ये 5-6 प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मार्केट में, तो ये मार्केट सस्टेन नहीं करेगा. मतलब मैं ये बात कहना इसलिए चाहता हूं कि ये जो रैली हो रही है
कि बेसिकली क्या हुआ है कि कल से और आज तक में बहुत सारे कॉल राइटर्स ट्रैप्ड हो गए हैं, जिन्होंने 15,700 से 15,800 900 16,000 की जो कॉल बेची हुई थी पहले दो चार दिन पहले, वो सब अभी ट्रैप है। उसके चक्कर में मार्केट अभी नीचे नहीं जा रहा है। और एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो ड्रास्टिकली 16% तक चली गई थी, जो अभी बढ़ के कल तक 23% तक आई है। तो अब वो उन्होंने क्या थोड़े से लॉन्ग जो है अभी वो उन्होंने किए और शॉर्ट कवरिंग भी उसमें हुई है। तो बेसिकली ये रैली का जो फाउंडेशन है वो शॉर्ट कवरिंग का है, और ये थोड़ा सा ये जो अपना कॉल राइटर्स जो है वो ट्रैप्ड हुए हैं उनके कारण है। जैसे ही ये कॉल राइटर्स का जो पोजीशन है ये स्क्वायर ऑफ होगा, उसके बाद मार्केट विल अगेन स्टार्ट गोइंग ऑन द डाउन। और एक और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया निफ्टी का, जो मैंने चार्ट देखा, जो 3 हेड्स हमको जो दिखते हैं, कि स्पेन का या पोर्टुगल का एक किसी एक यूरोपियन कंट्री का एक चार्ट मैंने देखा। ये चार्ट स्ट्रक्चर जब भी बना है तो उस मार्केट में कभी भी तेजी नहीं हो सकती है। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो आपको लोअर टॉप एंड लोअर लोज आपको जो दिखेंगे सिमेट्रिकल में, जिसमें अभी 15,200 का लो बनाया। तो ये स्ट्रक्चर जब भी किसी भी मार्केट में बनता है तो उस वो मार्केट का इंडिकेशन ये उसमें बुलिशनेस कभी नहीं होती है। बियरिशनेस ना हो लेकिन बुलिशनेस नहीं होती है। तो बस मैं यही बात मैंने ऑब्जर्व की थी मार्केट में कि ये कुछ की प्लेयर्स हैं जो मार्केट के रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमको लगता नहीं कि मार्केट में किसी भी तरह की रैली का कोई मीनिंग होगा। जी समर जी। यस यस, वेल सेड राजीव जी। थैंक यू। वॉल्यूम भी नहीं है जो आप बोल रहे हो, उसमें सब्जेक्ट टू वॉल्यूम भी नहीं है। जो भी कोई भी स्टॉक है आज के दिन में, तो इफ यू टेक एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, तो कैश में कोई वॉल्यूम नहीं है। जो वॉल्यूम है दैट इज इन फ्यूचर्स ओनली। सो द बिग बॉयज आर प्लेइंग इन द फ्यूचर्स, नो वन इज देयर इन द कैश मार्केट एज सच इफ यू सी। सो अगर बुल्स है तो फिर कैश मार्केट में होना चाहिए ना, वहां पर भी द ट्रेंड शुड बी बुलिश। ओपन होने के बाद सस्टेन भी होना चाहिए। ऊपर नीचे करके दे आर जस्ट प्लेइंग लाइक ए फूल्स गेम। अभी लेट्स सी। अभी वीकली वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए हैं वीकली में जो एक्सपायरी के, और उसमें जो कॉल राइटर्स है ना उनके ट्रैप होने के कारण और गैप अप के कारण आपको जो भी दिख रहा है वो उसके कारण दिख रहा है। अदरवाइज मार्केट में सबसे जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है ना वो टोटली मिसिंग है इस समय। जी समर जी। उसमें ऐसा है राजीव जी, algos and जो better Dr. Prashant is there in this space, who has designed this algo and works on that thing, वो they are doing very good, okay, but the nuances जो अभी आए हैं 2020 के डाउन में और फिर बाद में रैली में जो नए nuances आए हैं, वो सेल्स ऑन द बॉलिंजर बैंड का 3x करके, so they are getting butchered right now, very well seen in the expiry. दोनों साइड सबका काटा था। हेलो हेलो, am I audible? या तो वो तो एक्सपायरी में पता चल गया था, दोनों साइड सबका स्टॉप लॉस गया था लास्ट एक्सपायरी में, तो वो वॉल्यूम वहां पर है। एक चीज और बस मैं ऐड करना चाहूंगा, आज बहुत सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग हुई है 15,700 पर, तो जिसके कारण ये मंथली एक्सपायरी जो है हमको बहुत ही वोलेटाइल दिखने वाली है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ वी कैन सी 16,000 16,200 लेवल्स, जस्ट बिकॉज दीस कॉल राइटर्स विल बी गेटिंग ट्रैप्ड। वो ब्लिप आएगा राजीव जी, ब्लिप आएगा। आप सुनिए, बुलिश होने के लिए आई डोंट हैव एनी इशू, बुलिश हो जाओ, बट मेरे को उनके साथ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट द वे दे आर बुलिश ना, इट इज नॉट गेटिंग सपोर्टेड बाय द मार्केट एज सच। आप बुलिश होने के साथ भी मार्केट डेटा भी सपोर्ट होना चाहिए, but data is not supported anywhere in the stocks also. Okay, Reliance is not getting in the support mode, which was वो जो कर रहा था पहले, Reliance सपोर्ट कर रहा था, ऐसे ही 40-50 पॉइंट का मूवमेंट तो Reliance में बहुत इजीली होता था, बट राइट नाउ इट इज नॉट देयर। सो अगर कमोडिटी प्राइसेस नीचे में जाएंगे, प्रॉब्लम है, घर में बाप में प्रॉब्लम है, तो ओवरऑल फैमिली आगे नहीं बढ़ सकता। दैट्स माय व्यू पॉइंट। Okay. नहीं, कमोडिटी नीचे जाएगी तो रिलायंस का रेट नीचे ही जाएगा, रिलायंस नीचे रहेगा तो मार्केट कहां से ऊपर जाएगा? सर देखो, नैरेटिव है ऊपर नीचे जाने के लिए, ओके, बट द थिंग इज कि एग्जॉशन है मार्केट में, एंड उसकी वजह से ऊपर जाने के लिए दे नीड ए लॉट ऑफ कैपिटल टू। यस सर। ये बंद रखो, निफ्टी का डिस्कशन छोड़ो यार।
हाँ जी सर, ओके सर। का भला नहीं हुआ है। या नीरव भाई, देन हरमित जी। शरद भाई, हाँ क्या बोलो। ठोकना चाहिए? हाँ, क्या ठोकना चाहिए रिलायंस के सिवाय? क्या ठोकना चाहिए मतलब? Which stocks to short? आई विल नॉट से। और कुछ पूछना है? One more thing. हम्म, How far do you go? I mean, how far do you expect Nifty to go? 12,000 No, in this short term. Next शॉर्ट week, टर्म। like you said, 2 days, it could rally. नहीं, वो शॉर्ट टर्म में को नहीं आता है। शॉर्ट टर्म So में अंगूठा। 12,000 is what you're saying. यस। Thank you very much. Goodbye, everybody. या मिस्टर हरमित। Sir, good evening, Samad. Good evening, Sharad ji. How are you, sir? Interesting topic. I'm talking a lot about stock listening to you guys. तो मैं बस 1-2 मिनट लेकर थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव वो डाल देता हूँ। मेरा मानना है सेकेंड फेज ऑफ द किलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट 4-5 days. आई रिमेम्बर टेलिंग धीरज जनवरी में डीजे को मैंने बोला अप्रैल से बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। अब जैसे जुलाई चालू होगा things will move into another orbit altogether, whether it is the geopolitical, the economy. And for me, fundamentally, as a businessman, and I mean, I don't trade in stocks at all. For me, every penny is about going into business, as I said last time also. When I meet up people in the market, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो भी कंफ्यूज्ड है, किसी के पास पैसा है वो भी कंफ्यूज्ड है। जिसका पैसा उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है। जिसका पैसा नहीं है तो उसका तो वैसे ही कंफ्यूजन है कि पैसा कमाऊं कहाँ से। तो मेरा तो फंडामेंटल आइडिया बड़ा सिंपल है। व्हाइल वी टॉकिंग मार्केट, वी टॉकिंग एवरीथिंग, इफ द पेन इन द इकोनॉमी, pain at the grassroots level is there, where people are absolutely, in a zombie mode. They don't know what to do. They don't know what is staring them in the business. There's so much of uncertainty. And I'm not calling doomsday. As I said, all these things can also be seen in a very positive way. The more the market is in a chaos, it's also a very great time for opportunity if you're very, you're sharp enough to understand that. But at the same time, for a larger chunk of the population, chaos is when they run towards catastrophe. तो मेरा मानना है कि मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं लोग, obviously those who like doing it are doing it, but people are not getting avenues to make money. So वो धीरे धीरे जब हिताश होंगे मार्केट के अंदर भी कि यहाँ पर पैसा नहीं है, now they are getting, they're losing a lot of money. I think you'll see the volumes in all this, even in the stock market, going down, because people would want to conserve whatever savings they have, whatever earnings they are, and slowly uh, things are becoming tough. A lot of the offtake in consumerism has happened because of low interest rates. The interest rates are going to tighten. As I said, I have been of the opinion they should have been done long back. And things are going to go into a next phase in Europe. I am extremely convinced, as I said last time also. शरद भाई, अगर आपको याद होगा 2-3 हफ्ता पहले भी मैंने बोला था कि things are going to get worse in Europe, and they are getting worse. Things in Middle East are slowly moving in the direction which I am of the opinion. So you will have global economies going bad. You will have going further. If today we can talk crude between 100 and 110, which looks very nice right now, but we don't know what is the bend of the curve 4 months down the road, 5 months down the road. So any kind of recovery in the economy, even if there is a cooling off in the crude, if it hits a dead end at some point of time in the next 2 quarters, it will be catastrophic. So I think that's my limited point at this point of time, sir. Thank you. Thank you, Harpreet ji. Thank you. Yeah, Mr. Jackie. सर गुड इवनिंग। शरद सर कैसे हैं? बढ़िया।
Yes, sir. हेलो। Please tell sir. हाँ सर, कुछ कहना तो नहीं है शरद सर से, जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है सर, अगर आप एक बार डीएम चेक कर लें तो आपका शुक्रिया। कुछ कहना तो नहीं है और ओके प्लीज सर जी, थैंक यू। Yeah, anyone has any questions can please ask. अभिषेक, आपके पास कोई रिक्वेस्ट है क्या स्पीकर की? वो चला गया लगता है। हाँ, सो गया है। वैसे मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है अभी। तो एक ट्रेंडोनॉमिक सर्च जी है, इनवाइट करता हूँ उनको। नहीं मत करो उसको। नहीं सर, आने दो ना सर। नहीं वो बहुत इरिटेटिंग आदमी। और कोई ठीक है सर, तो अभी तो कोई है नहीं रिक्वेस्ट। किसी को कुछ स्टॉक का कोई पूछना है, कुछ एनीथिंग? जावेद जी, आपको कोई लेवल्स जानने हैं तो यू कैन सेंड ए रिक्वेस्ट, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप सर। नहीं, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट मेरे पास है। आई अप्रूव इट। यस, बोलो भाई। अभी कृष्णन बुकी। अभी कृष्णा दास, अनम्यूट कीजिए और पूछिए सर आपका सवाल। सर मैं ऑडिबल हूँ? सर मैं अभी रिसेंटली 2 साल हुए हैं मेरे को भी मार्केट, न्यूबीज हूँ मैं मार्केट में। बट अभी जो मेरा भी व्यू था, अब आप लोग को डिस्कशन सुन के तो काफी स्ट्रांग हुआ जो डाउन साइड पे, बिकॉज मैं वैक्सीन इंडस्ट्री में हूँ और पिछले 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही मतलब 40% 60% सेल्स ओवरऑल डाउन है। जो हमारा सिर्फ मैं अपनी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जीएसके हो या सनोफी हो या फिर बीज हो, जो भी वैक्सीन इंडस्ट्री स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही डाउन। उसका वजह क्या देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे शिफ्ट हो रहे हैं, जो भी लोग प्राइवेट में वैक्सीनेशन कराते थे वो गवर्नमेंट सेटअप की तरफ उनका। और वहां पे क्या है कि इनकम फिर उतनी, सारे प्राइवेट कंपनियों के बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, उनका ट्रस्ट बढ़ गया है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो तो इन सब चीजों को देखते हुए कि चाहे ओवरऑल और भी जो मेडिसिन की उसमें है, वहां भी सेल्स बहुत ज्यादा डाउन हैं, 30 to 40% तक। तो बस मैं भी अपना ऐसे मैं फर्स्ट टाइम आपको ज्वाइन किया था, ऐसे मैं पॉइंट्स सोचा शेयर करूं। आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से सर। ओहो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो और बात बताओ उत्तर प्रदेश का, बोलो। सब ठीक ठाक है? सब एकदम, यहाँ पे तो सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक, यहाँ कोई वो नहीं सर। बट ये है कि थोड़ा सा, हाँ मैं भी सर थोड़ा सा ना आप लोग मतलब साथ में रह के थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ, अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम जॉब मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहता हूँ। मतलब अपने आप को टाइम भी दिया हूँ, 4 साल 5 साल जो भी लगे, बट धीरे धीरे ही बट सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कुछ इसमें। नहीं तो एक बात बोलता हूँ, आप है ना वर्धमान टेक्सटाइल ले लो। सॉरी सर, आप वर्धमान टेक्सटाइल ले लो। वर्धमान टेक्सटाइल? हाँ, ओके, अच्छा रहेगा आपके लिए। हेलो। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। वो सर के टाइमलाइन पे 5-6 स्टॉक भी बोले हैं उन्होंने। हाँ तो यू कैन बाय इट। राइट सर। स्टॉक कैसे भी करना, एक साथ मत करना। हाँ वो हर जब फॉल आएगा तब तक मैं अरे फॉल भाई एवरी मंथ लेना। हाँ एसआईपी की तरह ले लूंगा। हाँ, फॉल होए तब मत लेना, आपकी मयूर भाई वेट पे लेना। मयूर भाई बोलिए। मयूर भाई शाह। हाँ, गुड इवनिंग शरद भाई, गुड इवनिंग समर भाई एंड एवरीवन। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। हाँ,
I I will start by sharing which once I read somewhere and would be useful at the current scenario in the markets. There was one fund manager in the US, Ralph Wanger, one of the very successful investors between 1970 and 92. He once gave an analogy of walking a dog. If you look at a dog, a man walking a dog, the dog seems to be jumping randomly. Sometimes, forward, backward, sideways, here and there. Sometimes jumps on the owner for no reason, or sometimes it barks at other creatures also. Price is something like that, like the dog. But the main trend or the fundamentals of economy and the ground realities are like the owner of the dog, which is holding the leash in his hand. So, if you clearly look at the owner, you will know that wherever the dog is jumping, ultimately it is moving towards. He said northeast. In his analogy, he said in the northeast direction at 3 miles per hour, and ultimately it is going to reach where the owner is taking it. So this up move that we are seeing now is like that dog jumping for whatever reason. One of the reasons I see is basically we are coming into the fag end of expiry of this month. A lot of short coverings, etc., is happening. I myself booked a few losses, but still holding on to largely all the positions which are still in my below stop loss levels. Also talking about stop loss, I wanted to share that different people have different time frames. कोई 5 मिनट के लिए भी position लेता है. So he has a very thin stop loss, and someone takes for few months. So हर एक का stop loss level भी अलग होगा. Also that stop losses are meant to be broken. अगर उड़ जाए तो वो stop loss कैसा? And I was the 2 nights ago, late night I was watching The Big Short one more time. Actually, I thought it would be good to watch it again. This guy was shorting 1.3 billion position against bond yields in housing market and holding it for almost 2 years and in loss up to 20%. Anyways, this was just thoughts going into my mind to prepare psychologically for these kind of pullbacks and upward. This is definitely not trend change. There's no indication on charts that this is no formation, nothing on charts that says that this is a trend change. This is just a temporary pullback. As people have shared their levels. I see 16085 as the ceiling for this up move, and only if it closes above that, it might extend. Otherwise, we're heading back to original targets of sub 14,000 levels. That's all for now. Thank you very much. मयूर भाई मेरा लेवल 16021 है, which is very near to yours also. 16021 वही 100 के बीच में मतलब. और दोनों एक दूसरे का ताली बजाओ. उसका एक और रीजन ये भी हो सकता है ना, ये 16,000 मयूर भाई सार्कास्टिकली बोल रहे थे सर, उनको निफ्टी नहीं पसंद. I know. मैं क्या बोलता हूँ? हाँ जी. सौदा इतना ही रखो कि काटना ना पड़े. बराबर भाई. स्टॉप लॉस का विचार किया तो सौदा नहीं करने का. बराबर एकदम बराबर है भाई. स्टॉप लॉस क्यों? If you are convinced of your idea, तो स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए? ट्रू. मयूर भाई एक्सिस बैंक के लिए वही बोला था मैंने आपको. आपने बोला ही था कि यू डोंट फॉलो स्टॉप लॉस. नहीं, बट इसीलिए हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अलग होता है. नहीं. एक्सपीरियंस भी अलग होता है. नहीं, रिस्क मैनेजमेंट इज अ डर्टी वर्ड. Suppose you can trade 100 lots. Right. Suppose your capacity is 100 lots. If you trade only 10 lots, if you trade only 10 lots, where is the need of risk management? True. आप अपना कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हो, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट चाहिए. उसके लिए आपको स्टॉप लॉस चाहिए. मत रखो. Absolutely. If you were no.
just a moment. If you wear a condom, तो बच्चा नहीं होगा बॉस, कभी भी नहीं होगा. तो करना है तो खुलेआम करो, थोड़ा ही करो, बहुत थोड़ा करो, लेकिन दिल से करो. Yes, ये yes, मेरा बोलना है सर. yes. In general, I was just sharing. Also, I want to own up that my short picks, especially in the auto sectors, have all failed, and I own up that. It's ultimately market, but we can come back when the downtrend resumes. मयूर भाई एम एन एम के बदले टीवीएस मोटर एंड हीरो अरे मोटो भाई, मेहरबानी करो ना, रिलीज ऑटो कर. को छोड़ो यार. ऑटो इज सर अ शॉर्ट वेरी करना है स्मॉल सर. सेक्टर एंड ईच एंड एवरी शेयर इज कॉर्नर्ड. मत जाओ ना उधर यार. वो तुमको हरा देगा, हरा देगा, हरा देगा यार. आप ऑटो का नाम मत लो मेरा स्पेस पे. हारेगा ही तुम, 100% हारेगा. बेचोगे या लोगे, आप हारेगा, हारेगा, हारेगा. हाँ, हाँ सादिक भाई बोलिए. हाँ सर, कैसे हैं सब लोग? हाँ बस बोलो बोलो. अच्छा, हाँ सर, आपको एक बार स्पेस पे सुना था कि मैं तो लेता हूँ और सो जाता हूँ, सॉरी, हम्म, शॉर्ट करता हूँ और सो जाता हूँ. हम्म, तो अगर अभी जैसे हमने शॉर्ट कर दिया है कोई चीज, हम्म, तो हम सो जाए, भले से उसका प्राइस ऊपर जा रहा हो, हम्म. तो अल्टीमेटली वो आ जाएगा अपनी जगह, राइट? अभी क्या शॉर्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता हाँ, अगर वो एक मिस्टेक हो गई कि सर मैंने ऑटो में शॉर्ट कर दी. है. अच्छा, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो. नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर आपका वो वाला मतलब मेरे पास कैपेसिटी है, आई कैन होल्ड इट टिल फॉर एवर, हम्म, तो वही वही पूछ रहा था कि मतलब वो आएगा, लॉजिक. हाँ, आएगा, पक्का आएगा, आएगा. ठीक है आएगा. सर, ठीक है, उतना ही पूछना था. थैंक यू. और हाँ. पीड़ी को कुछ बोलना है. यस, ये अभी मयूर जी ने बोला ना, तो वो आपने उस दिन बोला था वो याद आ गया. उन्होंने टीवीएस के बारे में बोला था और आपने बोला था ये दुखी करेगा तुमको, शॉर्ट में मत करो. जस्ट रियलाइज, वो रिकलेक्ट हुआ, इसके लिए हाथ ऊपर किया था बस. बस या अरविंद जी. या शरद सर, आपको सुन के लगता है कि आप ऑब्वियसली आप सीनियर हैं, आपको बहुत पता भी है इतने सालों से मार्केट किस तरह चल रहा है, पर आपने लॉसेस को कभी कैसे हैंडल किया है सर? आपको सुन के लग रहा है कि कभी लॉस हुआ ही नहीं है सर, एकदम आप बिंदास रहे. बट एनी आइडिया आप किस नहीं, तरह से लॉसेस को आपने हैंडल किया है, जिससे आपका एक पर्सपेक्टिव? नहीं, नहीं. अगर आप मेरा वो क्या बोलते हैं, वो ट्विटर हैंडल पढ़ेगा मेरा, तो मैंने लिखा है माय सक्सेस रेशियो इज ओनली 13% एंड 87% लॉस. तो लॉस तो मेरा साथी है और प्रॉफिट मेरा दुश्मन है. पर क्या होता है, लॉसेस वो छोटे छोटे होते हैं, वो प्रॉफिट होता है तो बहुत बड़ा होता है. दैट्स हाउ आई एम एबल टू सस्टेन. यू तो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई गेट इट, मतलब आपका ऐसा है कि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, बट शॉर्ट टर्म अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप वो हैंडल कर सकते हैं, यू कैन मैनेज इट. नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर, सी, वन answer for everything is not there, and it's not applicable to every trade I take. I do scalping, I do short-term trading, and whatnot. But the core position, I don't touch it. आप समझे? कोर पोजीशन यानी सर, सॉरी?
जो मुझको लगता है कि 100 रुपया हो जाएगा, 2,000 का, 3,000 का, वो मैं छोड़ता नहीं। ओके ओके, मतलब आपका नहीं, आप पूछो ना, पूछो। नहीं सर, मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म व्यू है, आप वो उस पे ज्यादा जाते हैं, मतलब आप वही बोल रहे हैं कि भाई हाँ, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है कि भाई ये अल्टीमेटली किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे, बीच में जो भी वो खेल खेले दैट इज ओके। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बेर हूँ, मैं भी बुल हूँ, बट द टाइम्स आर बेरिश, सो आई एम अ बेर। हर एक सिनेरियो में अपने को बदलना पड़ता है, तो लगता है 2 साल तक मंदी चलेगा, ज्यादा ही चलेगा, तो मंदी करता हूँ। बराबर है सर, बट आपको लगता है ऐसा कि बेयर पीरियड, जो जितने भी बेयरिश पीरियड्स है हिस्टोरिकली छोटे हो रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये पीरियड शायद थोड़ा लंबा चल सकता है? नहीं जो नहीं, ये क्या है कि बट इन द इंटरनेट वर्ल्ड एवरीथिंग इज शॉर्ट। मंदी भी शॉर्ट है, तेजी भी शॉर्ट है। हाँ, आनंद भाई बोलिए, आनंद भाई बोलो। ये कौन पूछ रहा था बेयर पीरियड शॉर्ट हो रहे? ये है अपने हरमीत भाई। मैं बोल हरमित भाई, ऐसा नहीं है। सी, इफ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री एंड आप 100 साल का चार्ट एनालाइज करोगे ना, तो you will see that this shorter time periods of bear market and longer times of bear market, they are different cycles. छोटे छोटे बेयर मार्केट और छोटे छोटे बुल मार्केट मिलके एक बड़ा साइकिल बनाते हैं, एंड वो जब बड़ा साइकिल खत्म होता है तो बड़ा बेयर मार्केट आता है। तो it is not that the bear markets are shorter. See, in 66 we had in 1966, if you go back to 1966, you had a 18-year bear market, sideways market. नाउ ये मान के चलते हैं, चलो मार्केट जो बोलते डूम्सडे जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा। अब ये अगर 18 साल 20 साल अगर निफ्टी 18,000 और 12,000 के बीच में घूमता रहा तो आप क्या करोगे? See, but point is, I agree. you don't understand this possibility You're right. also. You get the point. Sorry. So, and there are two kinds of corrections. One is a time correction, one is a price correction. जब भी प्राइस करेक्शन होता है तो बहुत स्विफ्टली नीचे जाता है, बट व्हेन देयर इज अ टाइम करेक्शन प्राइस ज्यादा डिक्लाइन नहीं होगा, बट आपको थका डालेगा। So you have to look at it. So this time it could be a time correction. It may not be so deep, but it can take a very long time. So are you prepared for such an eventuality is the question. आनंद जी, अगर आप बात करते हैं सेम चीज की, जापान निकी की इंडेक्स इज गोइंग थ्रू द सेम टाइम करेक्शन फॉर द पास्ट मेनी इयर्स। 30 साल हो गए भैया। हाँ, 30 साल सेम इंडेक्स, 30 years. That is an isolated incident. No, not really. 1979 में सिल्वर रीच $50, आज भी वहां तक नहीं पहुंचा है। नॉट रियली। 40 साल हो गए, सिल्वर हैज नॉट रीच इट्स पीक। तो अगर आप लिक्विड हो गए, Sorry, sir. I'm not. I don't mean to interrupt you, and I'm not saying you're wrong. Absolutely, historically correct है. मैं सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहा हूँ कि द मोर, जिस तरह से सर ने बोला कि हमारे इस इंटरनेट एज में थिंग्स आर बिकमिंग वेरी फास्टर बिकॉज कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट है भाई 24 घंटे ही रहते हैं दिन में। वो चीज जिस तरह से पहले पर्कुलेट होती थी टॉप से डाउन, इट वुड टेक टाइम, देन इट वुड टेक टाइम टू गो अप। कुछ बोलूं? जी सर, एब्सोल्युटली बोलो। ये दिस टाइम इट इज डिफरेंट, इस बार अलग है, दिस टाइम इट इज डिफरेंट, मैं पिछले 40 साल से सुन रहा हूँ। नेवर हैज इट बीन एनी डिफरेंट। मार्केट इज द मार्केट। आज के दिन में भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आज के दिन में इंटरनेट आया करके दिन में 6 घंटे नहीं होते। So all these things are not going to change how a human being reacts and how we react to news. You may keep 1,000 computers, yet all those computers are running on human thought. कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं अभी भी 100 साल पुराना थियरी लेके मार्केट फोरकास्ट कर रहा हूँ, and I'm doing it pretty successfully. So all this is just sheer useless talk to fool people into
thinking something else than what is the truth. The truth is, ultimately वही कि भाई the ultimate fact remains कि history जिस तरह से repeat करता है, you feel that's still we are in the same cycle. नहीं. According to me, we entered recession end 2017. 2017 एंड से रिसेशन चालू हुआ है और बेयर मार्केट इन द मार्केट्स स्टार्टेड समवेयर इन 2018. ये बेयर मार्केट ही है, 100% बेयर मार्केट है, क्योंकि 2018 में जो कार्नेज हुआ स्मॉल कैप्स मिड कैप्स का और लार्ज कैप्स हिलता ही नहीं था, वो तब से है. फिर ये बच्चा लोग आया कोविड के टाइम में और उछाला तो वापस बैठ गया. वी आर इन अ सुपर बुल बेयर मार्केट. इट विल लास्ट नथिंग लेस देन 9 years from 2018. So 2027 तक ये बेयर मार्केट रहेगा. This is what I can be wrong also, but this is the nomenclature of the market. आज के बाजार में भी 5 स्क्रिप ही ऊपर लेके जाता है बाजार को, बाकी सब लंगड़ा है. So what does it prove? मारुति का हाई लगा था 10,000, कितना साल हो गया, वो नहीं आएगा. आनंद भाई, हाँ बोलो. बोलो. हाँ. ये आपने जो स्टेटमेंट बोला ना, आज भी 4-5 स्टॉक लेकर जाता है ऊपर. हाँ. चलो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं. जब भी टेक्निकल एनालिसिस का पहला बुक निकालते हो तो उसमें लिखते हैं मार्केट नैरो जब भी होता है तो वो टॉप का सिग्नल है. 2019-20 में भी यही हुआ था और अभी भी यही हो रहा है कि जब सिर्फ 4-5 स्क्रिप्ट मार्केट इंडेक्स चेंज करते हैं, उसका मतलब है इट इज अ वेरी नैरो मार्केट. नैरो मार्केट्स डू नॉट सस्टेन. ब्रॉड चाहिए मार्केट. मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं, इधर ही क्लियरली सब लिखा है. बट इसको देखो कैसे बेवकूफ बनाते हैं. जैसे इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ये बाकी सब भी कैच करेंगे. That is a wrong way of looking at it. Understand the basic point. Basic point is सब sustain नहीं कर रहे. So all businesses are not running. If all businesses are not running, it is not a sustainable bull market. Simple point. नहीं, आज का बाजार ऊपर था और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो 30-40 लाख का है वो तो डाउन था. तो ठीक है यार. अरविंद भाई और कुछ पूछना है? हाँ बोलिए. जी सर, सॉरी सर. आनंद सर, एब्सोल्युटली. आई मीन, मैं डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरी कितनी बार हैबिट है कि आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट. आई माइट एग्री विद यू, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या इज इट इन द राइट डायरेक्शन. सो आई अग्री विद यू दैट जिस तरह से पहले हो रहा था, it things do repeat in the same loop, but there are always new challenges approaching. हमने अब तक तो climate change तो factor ही नहीं किया है. The way things are going to shift with climate change, nobody is factored into the markets right now. So उसको किस तरह से हम करें, that is the new challenge. It's never happened in history ever before, not at least till the time when we had markets. What never happened? Climate change. I'm talking about climate change. The whole shift that is going to be caused by climate change, वो markets की history में तो पहले नहीं हुआ है. हाँ, So any new shift that we're talking, how do we? Hello. Hang on. Or manage or navigate any of ये those? devil's advocate में don't become another Amit Gulecha. Number 2. Okay. Number 2. The point here is, you have any practical way of comparing what is happening today with the past in terms of the climate change? So, because you are unable to answer the real problem here, you are trying to bring in other irrelevant things into the market. The market only goes up because people buy with the hope that they will be able to sell higher. The market only goes low because people are afraid they will not get the price again tomorrow.
That is the only reason why the market goes up or comes down. Forget the market. Market has got nothing to do with the business if you actually come to that point. कितने हैं जो बुक वैल्यू के नीचे चलते हैं, कितने हैं जो जिसका प्राइस इतना इन्फ्लेटेड है, देयर इज नो लॉजिक टू इट. So don't bring all these irrelevant things into it and confuse yourself. No, There no. is nothing which is new under the sun. Everything has happened before. It will continue to happen again. No, I'm just questioning my own thinking that if I'm thinking like this, that means there is nothing that we need to No. to the market. Just a moment. Whatever you are thinking, you have to not throw it at us. Restrain your thoughts. Absolutely. मैं फेंक नहीं रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल फेंक नहीं रहा हूँ. ये तो मेरा एक थॉट प्रोसेस है which can be absolutely wrong. नहीं, राइट और रॉन्ग वो छोड़ो, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके पास में रखो ना. आपको नहीं सर कुछ हरमीत जी, आप ट्रेड करते हो क्या? आप ट्रेड करते हो हरमीत जी? जी सर. आपको वो कोई सवाल है तो पूछिए ना. ये क्या क्लाइमेट चेंज, क्या शेयर बाजार इज व्हाट? तो मेरा शेयर सवाल बाजार बेसिक है, माल बेचने का, माल लेने का, बस उतना ही फंक्शन है मार्केट का. वो प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वो अलग बात है. इधर आप शेयर बेचेगा, आपको पैसा मिलेगा, आप शेयर लेगा, पैसा देना पड़ेगा. ये बेसिक फंक्शन है, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है. एक और चीज बोलता हूँ हरमित. हाँ जी. By the time you realize your father was right, your son is already telling you, Dad, you don't know anything. Which is absolutely right. Which I absolutely agree with you. We have a saying which is that grandchildren are God's rewards, for not killing your children. So, which is similar to what you're talking about. So, anyways, okay, fine, sir. Just final question I'll end with this is, okay, so the buying capacity you mean for the buyers will always remain constant in a way, irrespective of circumstances. Correct? But just remember that bears do have well capitalization. Bears are well capitalized. नहीं, क्या बोला हरमित, क्या बोला? सुना नहीं. मैंने बोला सर कि buying capacity will always will increase or remain constant no matter what happens external circumstances. Yes. Correct? And Okay. they will buy Jet Airways also. Okay. छोड़ो यार, क्या कैपेसिटी. Thank you so much. और एक बात बोलता हूँ, ये बाजार में कुछ भी हो जावे, ये बाजार बंद नहीं होगा, चालू ही रहेगा हमेशा, जिंदगी भर. सर दुनिया बंद हो गई 1 साल के लिए कोरोना के बाद, मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना दिया. यस. सो दिस थिंग विल कंटिन्यू. और बोलिए Shini, you want to add anything? Sorry. No, sir. You want There's to add this, anything? sir, I'll just repeat what I said in the beginning. अगला 1-2 हफ्ता इतना narratives आएगा, and we're seeing it in some of the earlier questions. And Harmeet, the only message I have for you is that the internet has made narrative spreading like it's the biggest disease, biggest virus. दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. So a lot of hype and story. So nothing is new. I agree with Anand ji also. Yeah, there are already tweets of new all time high and all हाँ, that मतलब coming ये in. इंटरनेट So में ये पंप एंड डंप बहुत अच्छा हो गया है. जो भी ये गेम्स खेलते हैं उनके लिए बहुत चांदी है इंटरनेट. But influencers are getting paid for these things. But sir, if you short once they're ready to be dumped, then I'm also getting paid for what they are doing. Yeah, Mayur bhai, anything to say? No, not really. I wanted to say climate change is a hoax. That's all. नहीं, वो ठीक है यार, छोड़ो. ये शेयर बाजार में ना
अभी प्लेयर्स बहुत कम हो गया, और ये वेडनेसडे को जो हुआ तो और भी कम हो गया। तो अभी ऑपरेटर और प्रमोटर लोग ही हैं, उनको कोई बकरा मिलता नहीं है, उनको तकलीफ ही होता है। और हाँ, इन इन what do you call, in this prehistoric era, dinosaurs were there. How they became extinct? There is an interesting data कि वो लोग ने सब कुछ खा लिया, ये खाया वो खाया वो खाया, बाद में खाने को कुछ नहीं था, कुछ नहीं बचा था, so they died. So dinosaurs became extinct because they did not have anything to eat. Similarly, these promoters and operators, mark my words, will die a natural death क्योंकि बकरा नहीं मिला। ऐसा ही बाजार है, संभाल के रहना। एक एक विचार आया तो बोल दिया, dinosaurs extinct and operators becoming extinct is a सर real. सर एक डीएम आया है अल्कोहल स्टॉक्स के ऊपर, योर व्यू। हाँ भाई, व्यू ऑन अल्कोहल स्टॉक्स, अल्कोहल यूनाइटेड alcohol. स्पिरिट। See, they might go down a bit or anything, but they are a good investment, very good investment. Alcohol is super green. दारू तो चाहिए ना यार, दारू के बिना कैसे जिएगा। मैं नहीं पीता हूँ भाई, 4 साल पहले तक बहुत पीता था, अभी नहीं पीता। राजीव जी बोलिए। नहीं, बस मैं आनंद भाई से कुछ पूछना था। आनंद भाई, कैन आई आस्क समथिंग? Is not there. हाँ पूछो। हाँ आनंद भाई, आपने बहुत अच्छा बोला कि ह्यूमन साइकोलॉजी एज आईटी साइकोलॉजी एज वेल। तो आप कह रहे हो 40 ईयर से मार्केट में कुछ नहीं बदला, 24 आवर्स, तो उस पर कुछ थोड़ा सा थ्रो लाइट डालेंगे फॉर दोज हु आर न्यू लाइक अस एंड ऑल, हाउ टू स्टे पार्टिसिपेटेड इन मार्केट? थोड़ा सा philosophy type or your experience can share will be a great help. See, for the primarily, everyone wants to explain the market. Okay, now we all agree. ये कितने बार रिपीट करता हूँ मैं, we all agree that the markets are illogical. क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है, किसी को नहीं पर मालूम। इन द कोविड लॉकडाउन में मार्केट ऊपर जाता है, when लॉजिकली स्पीकिंग वो मार्केट को और नीचे जाना चाहिए था। ठीक है ना? एंड देर आर मेनी इंस्टेंसेस, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मार्केट गिरता है, knee-jerk reactions. You'll start seeing that. Now this is a different time right now. अभी मार्केट नीचे आया तो पैसा गोल्ड में जाएगा, मनी इधर का उधर जाएगा, ये भी लॉजिक चलता है। Now markets have been coming down, gold is coming down, but all these logics do not really show as true in when you check the history. So when you are not able, when you cannot explain the markets in any way and everyone agrees to the fact that markets are illogical, तो ये मार्केट को रीजन से कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपका पूरा प्रमाइस ही इलॉजिकल है, नंबर 1। तो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये प्रमाइस सब इलॉजिकल है तो मार्केट ऊपर और नीचे क्यों जाता है? मार्केट ऊपर जाता है क्योंकि लोग बाय कर रहे हैं, मार्केट नीचे जाता है क्योंकि लोग सेल करेंगे। That is the basic understanding. Now, why does anybody buy? Agar market, and why do people sell in a market which is going down? People sell because they are afraid that they will not get the same price again. Okay, and people buy because they have a hope that they will be able to sell at a higher price to make a profit.
That is where your true explanation of fear and greed comes in. So if you take all of this, the markets go up because people buy with the greed, and markets go down because people sell in fear. Now this behavior is universal and it does not change. जो पैटर्न इंडिया में होता है वही पैटर्न यूएस में होता है, वही पैटर्न बिटकॉइन में होता है, वही पैटर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है. सो वेयर इज द चेंज? And ye patterns have been repeating all the time. There is, so if you keep saying this time it is different, but this time kaise different hai ye to samjhao. You say irrelevant logic, irrelevant points lekar aake aap samjhate ho. So to truly understand the market, you have to go back to research the market और कब क्या होता है. देखिए एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ. आप कहाँ से हो? अनु भाई मैं अभी तो दिल्ली में 10 साल से, बट 5 to 8 it's मुंबई एंड देन जयपुर, बट नॉट दिल्ली. नो प्रॉब्लम. दिल्ली से हो ना? हाँ. दिल्ली में दिसंबर में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के घूमोगे ना? और मई में स्वेटर पहन के घूमोगे ना? ना. तो कैसे पता आपको मई और दिसंबर? या ऑब्वियसली क्लाइमेट से ऑब्वियसली आपने वो विंटर और समर का साइकिल देखा है ना? एंड यू ऑब्जर्व्ड एंड यू हैव सीन दैट. Now, for a moment, understand such similar cycles exist in the markets. Bull and bear cycles. Okay, so the only difference is you just need to know how to look at it. That is why I keep saying all these other things are immaterial. It is a natural cycle of optimism and pessimism which keeps going on. Yeah, that's I've understood, because Isaac Newton lost all his wealth in South Sea stock. If you must be Albert Einstein. Yeah, Albert Einstein. Sorry. So he lost all his money in stock market, and he was a scientist. So he told कि nobody can understand human mind. तो yes, correct. वो तो 60s का आप जो bear market बता रहे हो, शरद भाई बता रहे हैं. My point is, my question is how to stay participated. See, as a just a normal thing. It's not about the thing. 40 years जैसे आज आप मुझे आप teaching experience पूछोगे, I can share my experience. But what is your experience? Is how to stay participated in the market if you want to be like करना ही करना है तो. Again, karna hi karna ho, to there are three different outlooks. One is an investor's outlook, one is a trader's outlook, third is a scalper's outlook. So each one, the approach has to be different. If you are an investor, ठीक है, आपके पास अगर 30 साल का टाइम है, लेके बैठ जाओ. आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा. इटर्नल ग्रोथ तो रहेगा. See, as a universe, as a country, as a state, every place is continuously growing. Markets are eternally bullish. मार्केट कभी मंदी में नहीं रहता है. अगर आप इतना लंबा टाइम पीरियड देखोगे तो मार्केट्स आर इटर्नली बुलिश, विच इज द लॉजिक जो ऑल दिस म्यूचुअल फंड्स गिव. मार्केट्स का अच्छा है, सही है. But truly speaking, if you are not an investor who has a horizon of 10 years and 20 years, then you become a trader who's looking either at 3 months, 4 months down the line, or you're looking at 2-3 days down the line. So in both these approaches, you have to study the markets in a shorter time frame and not look at these other extraneous factors, which do not really change. See, fundamental analyst आपको बोलेगा कि अगले 5 साल में मार्केट अच्छा है, पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, उस फंडामेंटल एनालिस्ट को सुन के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कल मार्केट गिरेगा तो आप क्या करोगे? So you have to approach the market differently. And that difference in market and shorter term swings in the market can only be explained by a technical analyst or a cycles trader. Yeah, so the point, the what I have learned in my life in coaching industry and now in stock market, it is very much important to understand technicals also and the fundament also. One way it's very difficult to play in these markets. No, I disagree with you. Okay. If you truly learn technicals, truly, I mean really, if you are able to teach somebody technicals, and you are not just from repeating from the book. ठीक है ना? हमारे बचपन में जो टीचर हमारे को पढ़ाते थे, उनको ज्ञान था, क्या पढ़ाते थे. आजकल के टीचर जो होते हैं वो सिर्फ तोते जैसा बोलते हैं.
So there's a difference. If you truly understand, if you are a good practitioner of technicals, you will be consistently profitable. That's right. Okay. And I have no idea of fundamentals. Hmm. And I spent 40 years in the industry making money year on year, month on month. So there is so I will not buy that logic that you need fundamental analysis. Okay. And see, basic fundamental analysis क्या होता है? आपने लास्ट ईयर का लिया, लास्ट 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर का लिया, लास्ट 5 साल का डेटा लिया और उसी को प्रोजेक्ट किया फॉरवर्ड. आपने और क्या बोला? लास्ट ईयर 10% किया, इस बार 12 कर सकता है. मैंने क्या बोला फंडामेंटल एनालिसिस में? They have nothing there. They are see, every time Sachin Tendulkar went out to bat, they said he'll score a century. But practically देखो तो 200 इनिंग में he scored only 40 centuries. So his performance was only 20% in centuries. But what would now take it in terms of the fundamental analysis? He would say he goes out, he scores a century. और हुआ नहीं है. There is a hope that he will do. लास्ट मैच में सेंचुरी बनाया, नेक्स्ट मैच में भी बनाएगा. फॉर्म अच्छा है, ये है. इन्फोसिस लास्ट 3 साल से ये कर रहा है, 4th ईयर ये करेगा. There is no way that they can forecast. They are only taking the past and going up. And after a market puts in a top and the results come bad, then the fundamental analysts will come and say there is challenges. Next year we see lower growth. आप स्टडी करो, आप understand it, then you will see that fundamental analysis is basically a lot of bullshit and gas. That is why I shifted to technical analysis. But now speaking here also, there is a lot of misinformation given in the name of technical analysis, which is not true, which you are able to forecast the markets most of the time on a shorter swing. Yeah. Okay. So the third one is the scalper. The scalper is not interested. He is only looking at the volume which is happening on an intraday basis. So what has happened is India has got a fetish with intraday trading. शायद easily credit मिल जाता है या कड़के है सब. So there are 3 different approaches. Now depending on how you want to approach is the way you need to study. And this is the way you need to participate in the market. Wonderful. Wonderful. Thank you. Thank you. My pleasure. सर और कोई नहीं है अभी रिक्वेस्ट में? शरद सर. हाँ तो वाइंड अप करें. Yes sir. Okay. Yeah. Thank you. Anybody? Good night everyone. Good night.